बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और अब आप फैसले दिखाई देंगे कि किस तरह से टीम तब्दील होती है। मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद मुझे 5 से 7 खिलाड़ी टीम से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कौन से खिलाड़ी हैं वो आप भी खूब जानते हैं। अगर हम साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब को 20 से 21 मैचों में मुसलसल मौका दिया गया, लेकिन किसी भी मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फिटनेस का शिकार आजम खान भी इसमें शामिल होंगे, जबकि इमाद वसीम पहले से टीम से बाहर हैं, यानी कि वो वर्ल्ड कप के लिए ही टीम से में आए थे। उसी के साथ साथ शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि टीम में अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आपकी बेंच पे जगह होगी और बेंच पे भी मेरे ख्याल में नहीं होगी, आप टीम से बाहर होंगे और परफॉर्मेंस को मौका दिया जाएगा। मुसलसल कहा जाता रहा है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को वर्ल्ड कप के लिए और दीगर सीरीज में या इंटरनेशनल सीरीज में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह से मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी है, मोहसिन नकवी ने हार के बाद बयान दिया है कि अब बड़ी सर्जरी होगी, तो अब बड़ी सर्जरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके बाद 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। अगर सर्जरी नहीं की गई तो इसी तरह के रिजल्ट आपको 1 साल बाद यकीनी तौर पर नजर आएंगे। अपने ही मुल्क में पाकिस्तान हारता हुआ दिखाई देगा। इस मैच से पहले साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे कहा जाता है कि दामाद की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दामाद की सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो गलत करेंगे तो मैं गलत कहूंगा, लेकिन टीम में एक ग्रुपिंग चल रही है, टीम के गलत फैसले किए जा रहे हैं। मुसलसल गलत फैसले होने की वजह से टीम मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान हार रहा है। वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ी कहानी सामने लेके आऊंगा। अब वो कहानी क्या हो सकती है, किस तरह से क्या बात हो सकती है और किस तरह से हो सकती है, ये भी एक सवालिया निशान है कि साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात हो सकती है। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को हटाने की हिमायत में थे, लेकिन वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की सपोर्ट में नहीं थे, बल्कि मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट में थे। और वो इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि मैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान देखना चाहता हूं, लेकिन शहीन शाह अफरीदी को नहीं। अब शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया है तो फिर इसे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की सरबराही में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने गया तो वहां पे बुरी परफॉर्मेंस हुई और पाकिस्तान 5 में से 4 मैच हार गया और 1 मैच जीता था। फिर उसके बाद PSL आया, PSL में लाहौर कलंदर की बुरी परफॉर्मेंस हुई और फिर उसके बाद कप्तानी का सहरा एक मरतबा फिर शहीन शाह अफरीदी से लेके बाबर आजम को दे दिया। शहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेने के बाद शाहिद खान अफरीदी सामने आए और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बाबर को कप्तानी से हटाया गया, अगर वो गलत था तो फिर ये भी गलत है कि एक सीरीज के बाद एक कप्तान को हटाया जाएगा तो टीम मुतासिर होगी, प्लेयर्स भी मुतासिर होंगे और उस साबिक कप्तान की परफॉर्मेंस से शदीद नुकसान भी होगा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जब बने तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज हारे, फिर उसके बाद हम आयरलैंड से सीरीज जीते तो सही, लेकिन उसमें हम 1 मैच हार गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी सीरीज हार गए, वार्म अप मैच नहीं खेले, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में पहुंचे, वर्ल्ड कप में मुसलसल 2 मैच हार गए, पहला हम USA से हारे, दूसरा हम इंडिया से हारे। अब ये परफॉर्मेंस रही तो फिर पोस्टमार्टम तो बनता है। मोहसिन नकवी जिस तरह से बात कर रहे हैं तो फिर इन्हें पोस्टमार्टम करना भी चाहिए और होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट को फायदा होगा बल्कि पाकिस्तानी फैंस जो नाउम्मीद हो चुके हैं वो भी पुरुम्मीद हो जाएंगे। फैंस की जानिब से मुसलसल प्रोटेस्ट किया जा रहा है और तब्दीलियों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसे तब्दील किया जाए, कौमी टीम में तब्दीलियां की जाएं, मैनेजमेंट तब्दील की जाए। कोई तो वहाब रियाज को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है, जबकि कोई बाबर आजम को कप्तानी करार दे रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी में ऐसा हुआ है, बाबर आजम एक अच्छे लीडर नहीं है। जबकि कोई ये कह रहा है कि बाबर आजम को हराने के लिए, बाबर आजम को नाकाम करने के लिए टीम में ग्रुपिंग चल रही है और वो स्कोर नहीं कर रहे, जबकि परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। जबकि फैंस सोशल मीडिया हो या फिर अपीयरेंस हो, सारे तमाम जगहों पे वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आज सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है कि शाम 6 बजे यानी कि अभी जिस वक्त प्रोग्राम हो रहा है इस वक्त प्रेस क्लब और उसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और वो हो रहा होगा। पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है और हार का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी एक बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। गर्मियाँ शुरू होते ही दिल खुद ब खुद ठंडे और मीठे मशरूबात की तरफ माइल होने लगता है। गर्मियों में बेशुमार मशरूबात मुहैया होते हैं, लेकिन फिर भी रवायती और ऐसी मशरूबात की मकबूलियत अपनी जगह कायम है, जिनमें सरदाई या ठंडाई सर फहरिस्त है। सरदाई गर्मियों के आगाज़ यानी अप्रैल से सितंबर के महीने तक ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है। गर्मियों के आसार नमूदार होते ही सरदाई की दुकानें सज जाती हैं। दीगर मशरूबात पर सरदाई को तरजीह देने वाले लोगों का कहना है कि सरदाई के एक गिलास के बेशुमार फ़वाइद हैं। ग़िज़ाइयत के अतबार से सरदाई कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और पोटाशियम से भरपूर होती है। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गजा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई। झूठ को कर्ब करने का, झूठ को दबाने का कानून है। आज एक पार्टी की हुकूमत है और 5 साल भी पूरे नहीं होते कि वो रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया। खुदा ना खास्ता मसला हो गया, कोई लोगों से अफसोस करना है, चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। अगर कड़वे घूंट ना लिए होते तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वाकई में आप कोलैप्स कर चुके थे। जब तक जहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, पूरे मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते। अब नौजवानों की इमेजिनेशन बेहतर हो गई है, तो इसी गुरूर में वो उन्होंने कुछ कहा था कि हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे आपको, लेकिन वो गुरूर तोड़ लिया हमने।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिनेरियो पे कि क्या पाकिस्तान अब भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि वर्ल्ड कप के अगले मरहले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने 2 मैच हार चुका है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया अपने दोनों मैच जीत चुका है और उसी के साथ साथ पाकिस्तानी ग्रुप में शामिल तीसरी टीम यूएसए 3 मैच जीत चुकी है, जबकि चौथी टीम कनाडा अपना 1 मैच हार के और 1 मैच जीत चुकी है, जबकि पांचवी टीम आयरलैंड जो अपने दोनों मैच हार चुकी है, पाकिस्तान के हम पल्ला खड़ी हुई है। अब इस सूरत हाल में इन 5 में से 2 टीमें आगे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान इस वक्त 2 मैच हार के 0 पॉइंट, इंडिया 2 मैच जीत के 4 पॉइंट, यूएसए 2 मैच जीत के 4 पॉइंट और कनाडा 1 मैच जीत के 2 पॉइंट के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान और आयरलैंड 0 पॉइंट रखते हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं, यानी कि कनाडा और आयरलैंड के साथ, जबकि यूएसए के भी 2 मैच बाकी हैं और उसका मैच एक इंडिया के साथ है, दूसरा आयरलैंड के साथ, जबकि इंडिया के भी 2 मैच बाकी हैं, पहला यूएसए के साथ जबकि दूसरा आयरलैंड के साथ। इन 5 में से 2 टीमें कौन सी आगे क्वालिफाई करेंगी, ये भी एक मिस्ट्री है। अगर मगर की सूरत हाल पैदा होगी है, हमेशा की तरह, माजी की तरह, हर वर्ल्ड कप, हर टूर्नामेंट की तरह पाकिस्तान उसी सूरत हाल पे खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान बराह रास्त कभी भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं करता। आज भी अगर मगर की सूरत हाल पे है, पहले भी अगर मगर की सूरत हाल पे होता है, यानी कि फलां टीम फलां को हरा दे, फलां टीम फलां को हरा दे और बीच में हम भी जीत जाएं और इसी के साथ हम आगे क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में सूरत हाल कुछ अलग है और अगर मगर की सूरत हाल तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को भी जीतना होगा। पाकिस्तान हार के साथ आगे नहीं जा सकता। पहले 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन अब पहले अपने अगले 2 मैच तो जीते, फिर जाके पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल के लिए क्वालिफाई करेगा और अगर मगर की सूरत हाल में दूसरी टीमों के रहमो करम पे पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा, यानी कि यूएसए अपने दोनों मैच हार जाए तब जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा, या फिर इंडिया अपने दोनों मैच हार जाए और पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत जाए तब जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा। इंडिया, यूएसए और आयरलैंड दोनों से हार जाए तब जाके मुमकिन होगा पाकिस्तान अगर मगर में, लेकिन क्या इंडिया हार सकता है या नहीं? यूएसए, इंडिया और आयरलैंड दोनों से हार जाए तब जाके पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल में आएगा, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने परफॉर्मेंस दी है, शानदार खेल का मुजाहिरा किया है, पहला मैच कनाडा को हराया है और दूसरा मैच पाकिस्तान को, यानी कि दुनिया की नंबर 4 पर रहने वाली टीम पाकिस्तान को हराया है, जिसकी शानदार बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, उसको हराया है। क्या वो इंडिया और उसी के साथ साथ आयरलैंड से हार जाएगी? इंडिया से हार सकती है लेकिन आयरलैंड से नहीं हार सकती, ये नजर ही नहीं आता, ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तानियों की दुआएं काम आती हैं। पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल में पहले भी ऐसा होता रहा है कि वो गुजर कर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करता है। अब पाकिस्तानियों की दुआएं ही टीम को काम आएंगी और यूएसए या फिर इंडिया को 2 मैच हरवाएंगी, तब जाके पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते और तब जाके आगे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेगा, रन रेट की बुनियाद पे क्वालिफाई करेगा, फिर वहां पे रन रेट देखी जाएगी। अगर तो इंडिया 2 मैच हार गया तो फिर पाकिस्तान को इंडिया से आगे रन रेट अपनी बेहतर करनी होगी और उसी के साथ साथ अगर यूएसए अपने दोनों मैच हार जाता है तो फिर यूएसए से रन रेट बेहतर करनी होगी, तब जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के दूसरे मैच जो कि गुज़श्ता रोज हुए हैं। 2 मैच वेस्ट इंडीज और युगांडा, जबकि दूसरा मैच हुआ है स्कॉटलैंड और ओमान के दरमियान। वेस्ट इंडीज ने युगांडा को T20 के कम तरीन स्कोर यानी कि 39 रन पर ढेर कर दिया है और वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में से एक बन गई है। जबकि दूसरी जानिब स्कॉटलैंड ने ओमान को शिकस्त दी है और वो साबिक आलमी चैंपियन यानी कि इंग्लैंड के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। स्कॉटलैंड 2 मैच जीत चुका है और 1 मैच ड्रॉ हो चुका है, उसका बारिश की वजह से मुतासर हो चुका है।
यूं स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि साथ ही आलमी चैंपियन अपना एक मैच हार चुकी है, एक ड्रॉ हो चुका है। और इससे अगर वो अपने 2 में से एक मैच हार जाती है इंग्लैंड, तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना। यूं स्कॉटलैंड आगे क्वालिफाई कर जाएगा। वर्ल्ड कप में 10 तारीख को एक मैच होने जा रहा है आज, जो कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान होगा, जो अब से कुछ देर के बाद टॉस होगा और फिर 7:30 बजे मैच होगा। लेकिन दोनों टीमों ने एक ही टीम को शिकस्त दिया, यानी कि श्रीलंका। साउथ अफ्रीका ने तो श्रीलंका को 77 रन पर ढेर कर दिया था और वहीं पे 80 रन बना के मैच जीत लिया था। उसी के साथ साथ बांग्लादेश ने भी कुछ इस तरह से किया और श्रीलंका को शिकस्त दी और अपने 2 पॉइंट पक्के कर दिए। यूं दोनों में से जो टीम भी जीतेगी वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने वालों की दौड़ में शामिल हो जाएगी। जो टीम हारेगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो आगे क्वालिफाई करने में कामयाब होती है या नहीं। कल यानी कि 11 जून को वर्ल्ड कप का एक और मैच होगा, जिस पर पाकिस्तानियों की नजरें होंगी कि क्या पाकिस्तान इंडिया और यूएसए से हारने के बाद कनाडा से भी हारता है या नहीं। जिस तरह से परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान कनाडा से जीत जाएगा, यहाँ तक ये लगता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस रहती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान उठता है और जोरदार उठता है और इस तरह कनाडा की शामत नजर आ रही है। फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि 12 तारीख को 3 मैच होंगे, नेपाल और श्रीलंका का, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का, जबकि यूएसए और इंडिया का, जिस पर भी पाकिस्तान की नजर होगी। मैच तो इंडिया का होगा और पाकिस्तान की नजरें होंगी। वहीं पे पाकिस्तानी दुआ करते दिखाई देंगे कि इंडिया अमेरिका को हरा दे, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका क्या इंडिया को भी हरा सकता है या नहीं, क्योंकि अमेरिकी कप्तान यानी कि मोनाक पटेल ने कनाडा से हारने के बाद कहा था कि जिस हिम्मत और जिस जोश के साथ हम कनाडा के खिलाफ खेले थे, उसी जोश और जज्बे के साथ हम पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और दोनों को शिकस्त देंगे। एक मैच में तो वो उन्हें फतह नसीब हो चुकी है, क्या वो दूसरे मैच में भी फतह हासिल करते हैं या नहीं, यानी कि इंडिया को शिकस्त देते हैं या नहीं। इंडिया यूएसए से बहुत अच्छी टीम है, जबकि यूएसए कदरे छोटी टीम है। अगर तो पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करना है तो फिर इंडिया की जीतने की दुआएं की जानी चाहिए, और इंडिया की दुआएं करेगा पाकिस्तान, तब जाके यूएसए को शिकस्त होगी। इसी तरह से अगर यूएसए को फतह नसीब होती है तो यूएसए अपना अगला मैच हारे या जीते वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि पाकिस्तान अगर इंडिया हार जाता है तो फिर इंडिया का अगला मैच आयरलैंड के साथ है और आयरलैंड का इंडिया को हराना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो यूं पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। इसी तरह से 12 तारीख को पाकिस्तान का मैच तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नजरें जरूर होंगी और दुआएं भी कर रही होंगे कि यूएसए इंडिया से हार जाए। जबकि दूसरी जानिब नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। नामीबिया एक छोटी टीम है, बल्कि बहुत छोटी टीम है, नौमौलूद टीम है, अपने दोनों मैच हार चुकी है, जबकि अपने एक मैच जीत चुकी है, जबकि एक मैच हार चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो अपना एक मैच जीत चुकी है, यानी कि इंग्लैंड से। तीसरा मैच यानी कि सुबह सवेरे जो मैच है वो है नेपाल और श्रीलंका के दरमियान। नेपाल अपने दोनों मैच हार चुका है, जबकि श्रीलंका भी अपने दोनों मैच हार चुका है। यूं इनमें से दोनों में से जो टीम भी अपना पहला मैच यानी कि तीसरा मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन अपना चौथा मैच जरूर खेलेगी। उसी के साथ साथ जो टीम जीतेगी वो उस ग्रुप में मौजूद दीगर टीमों की परफॉर्मेंस से यानी कि अगर मगर की सूरत हाल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, और यूं दूसरों के रहमो करम पे होगी कि यानी कि वो टीमें हारे और वो जीते, और वो जीते तो वो दूसरी हारे, तो इस वजह से वो आगे क्वालिफाई कर सकती है। यानी कि नामीबिया और नेपाल का स्टेक भी थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में, जिसमें पाकिस्तान की बुरी बल्कि बदतरीन परफॉर्मेंस हुई है। पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी हुई है लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं हुई, जबकि उसी के साथ साथ वर्ल्ड कप में जारी मैचेस के बारे में भी बात की है। मजीद हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती, आपका मंशूर क्या है। किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। एक तरफ आप शैतान से मदद ले रहे होते हैं, एक तरफ अल्लाह से आप मदद ले रहे होते हैं। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where
became a doctor, and then became an orthopedics and a trauma surgeon, and then wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada, and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw all these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody is going to help them. So that was the inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you'll not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it, and we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them, but then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, this can't be done in Pakistan, a developing country, a rescue service, and one number and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances. If we imported them, we couldn't maintain them, the repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so in 2004. And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension, and they want to start their own project. Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government, who went there and said, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service, and today the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000 calls up till now with an average response time 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike ambulance service, was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today they are able to reach the most difficult areas, the most difficult narrow streets, even in traffic congestion they're able to respond to emergencies, and they immediately go. They're all trained staff. In 2005 we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people, and immediately 1 year after that we established our own disaster emergency response team, and then the team, we started building our teams and the capacity of that team, and we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG in South Asia. But then we established a model fire service, a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab, and today this fire service has responded to over 151,000
fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boats available with different organizations, so organized the service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish safer communities to live, work and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. I've previously talked about immigration and immigrants, and I want to talk a little bit more about that today. But first of all, let's get on record. In the UK, we are all immigrants of one sort or another. So I thought I'd start off today by talking a bit about where I come from.
we are many, many generations of agricultural peasant. But among the interesting ones was a French Huguenot who fled religious persecution in France in 1572. And he sailed away to Ireland, where he settled to rebuild his wine business, and he married an Irish girl 30 years his junior. His ancestors went on to Scotland and then became music hall artists. In those days, in the 19th century, the music hall was the entertainment. There was no television then, there was no radio, there was no cinema, and ordinary people went to the music halls, and there was one in every town here in the north of England. And if you look at my ancestors, there was a child born every year in a different town in the northeast of England, because they were going around playing on the halls. And from that came my interest in arts and culture, and some businesses that I had in the past, which were international concert promotion. The Ashby name that I have, that's Saxon, as far as we can tell. Now, about 1500 years ago, it was very likely that the Saxons came rowing ashore in small boats in the River Humber. They were what we would call today economic migrants, and one of them, an Ashby, that found himself a lively local lady who would take him on, and from them we are descended. So we came from a whole range of things, but we amounted to nothing until the Great War. On the side of the music hall side was a chap, my great uncle, who was asked to go to America with Charlie Chaplin and Stan Laurel in 1912. He came back because he didn't like it, and they were not getting on very well. It was before they were just before they were famous. He came back and he drove a bus in the Great War and for the rest of his life. In the Great War, another grandfather of mine, he became a soldier like so many others. My grandmother was a founder member of the Women's Royal Air Force in 1919, something that never ceases to astound people. My parents were both in the Second World War. They were both only children. Without them, there would be no me, and that would have been the end of the line. So we have served our country over the generations. Not me, because we didn't have to do. We haven't fought the wars, nor are the wars called upon with my children, and I hope and pray that my grandchildren are never called upon to fight in the wars either. So let's talk about the immigration in a wider sense. I've been talking about the various sorts of immigration previously. I've pointed out that the figures that have been headlined were in the media are net figures. They take off the people that have left. But I didn't mention that people who live and work in other countries are added back into the immigration figures when they eventually return. So most such people wouldn't think of themselves as immigrants, but that's what the statistics say they are. In fact, as the American author Mark Twain said, he may or may not have been paraphrasing the first Jewish Prime Minister in this country, Benjamin Disraeli. There are lies, damned lies, and statistics. People prey on the fears of others on these immigration figures, the 672,000 net immigration that I mentioned previously, and they make promises they can't fulfil, and they make shabby deals based on dubious data. Perhaps the most notorious was the Rivers of Blood speech by Enoch Powell in the 1960s. He was the health minister at the time and was quite rightly sacked for what he was saying about the future of immigration. He destroyed his own reputation. He was a very serious biblical scholar, but nobody remembers that anymore. They only remember this anti-immigration speech that he made, which went against the grain of British politics. Far too often nowadays, anti-immigration is seen as a valid point of view, and it's something with which I sincerely do not agree. So, right-wing politicians have
the anti-immigrant rhetoric right the way across Europe, and they are causing violence on the streets and fears in the communities, and this has to stop. Most people who criticise immigrants in the pub, in the supermarket, will exempt the people that they know, and that's because people like people to like them. If those who are new in our society could reach out to those here already, rather than hiding behind the hand of anxiety, maybe they will be likely to be received with a smile rather than a frown. Living together in our communities in peace and harmony should be a goal for everybody. The alternatives are just unthinkable. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. गर्मी का मौसम हो और ठंडा तरबूज ना हो, ऐसा तो सोचना भी मुहाल है। गर्मियों के लाजवाब फलों में से एक सुर्ख रंगत का ये फल छोटे बच्चों, मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों को भी बेहद पसंद है। तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो कि पानी की कमी और डिहाइड्रेशन से बचाता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। इसमें विटामिन ए, सी और B6 भी मौजूद है, जो कुव्वत मुदाफत को मजबूत बनाता है। तरबूज दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें लाइकोपीन होता है, जो दिल की बीमारियों से बचाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। ये इंतहाई कम कैलोरीज की वजह से वजन कम करने में भी बहुत मुफीद है। ये निज़ाम को बेहतर बनाता है। ये न सिर्फ आपको रिफ्रेश करेगा बल्कि सेहतमंद भी रखेगा। तरबूज का जूस कुदरती हाइड्रेशन का बेहतरीन जरिया है। अगर यूं कहा जाए कि तरबूज का हर एक बाइट आपकी सेहत को बेहतर बनाता है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। भी बिल्कुल बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी का तोड़ वाज तरबूज ही है ते सेहत वास्ते बड़ा अच्छा होंदा है ते हर खास वो आम वास्ते बंदा लै भी सकता है, हर बंदे की पहुँच तक है। तो सानू चाहिए कि गर्मी के जरूर ट्राई करना चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ हैगी है। गर्मियों का लाजवाब तोहफा तरबूज न सिर्फ जायके और मिठास में अपना मुकाम रखता है बल्कि इंतहाई सस्ता होने की वजह से हर खासो आम की पहुँच में भी है। ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। तो यहाँ तंदूर भी लग चुका है और यहाँ पे रोटियां लग रही हैं ताज़ी ताज़ी। तो चावलों की रोटी आ चुकी है हमारे पास। मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ढाबों की रिवायात।
My humble beginnings included living in a wooden hut where my mother cooked on a paraffin stove. I went to village schools, but I managed to get an education. And with education I progressed and I went through a career and I built a home, I built a family, and I built grandchildren who are now one of the delights of my life. That is what I wish for everybody, and that is what so many immigrants coming here want to do. They want to do the same thing. They want to build on the new start that they get in life, and that their children will live a better life than them. I was lucky perhaps, but the harder I worked, the luckier I got. And there are parallels here. If you look at the Sunday Times Rich List, you will see that there are a number of people of Asian origin who have come here and made very large sums of money, and they're continuing to do that, and they are giving that money back into their communities. Others, they contribute to our cultural life, making us all the richer for that. And if that's your story, please remember the words I quoted in the previous programme about the mother of an asylum seeker. Be there for people and be there for your community. Something good will happen in return. And indeed, the words of Dr. Martin Luther King, be judged by the content of your character. In the USA, the glue that binds their nation together is the English language and respect for their flag. We can and should be similar. We absorb ideas and words from those amongst us. The bungalow and all those wonderful cuisine from India. The Parker coat from the Arctic. Potatoes, and in my case especially chocolate, from the Americas. Chicken tikka masala was invented in Glasgow and is now exported to South Asia. A US president once said, the problem with the French is they have no word for entrepreneur. Well, I regularly see the entrepreneurial spirit locally at Newcastle's Asian Business Connections. I look forward to more immigrants rising up the rich list. They're actors on our television screens, cricketers putting England back on top, and the footballers helping to keep us win in Newcastle in the future. Or just live long, happy and fulfilled lives as your children and grandchildren become active members, giving back to our communities when they've been welcomed. As I was thinking about this, a friend pinged me to remind me of the British poem by Benjamin Zephaniah, who had recently died, and it perfectly concludes this. He was the children of immigrants from the West Indies. He was born in Birmingham, like my eldest son. He was a poet, a rebel and an actor, and I loved him in Peaky Blinders, the Midlands ganglands drama. He wrote, I'll read it here for you. Take some Picts, Celts and Silures and let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. Remove the Romans after approximately 400 years. Add lots of Norman French, some Angles, Saxons, Jutes and Vikings. Then stir vigorously. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. Then take a blend of Somalians, Sri Lankans, Nigerians and Pakistanis. Combine with some Guyanese and turn up the heat. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis and Bangladeshis together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinians. Then add to the melting pot. Leave the ingredients to simmer. As they mix and blend, allow their language to flourish. Binding them together with English, allow time to cool. Add some unity, understanding and respect for the future. Serve with justice and enjoy. Note, all ingredients are equally important. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. Warning, an unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Give justice and equality to all. Rest in peace, Benjamin. Please reflect on these words when you have a moment for quiet contemplation.
इफ्तार के साथ मैं हूँ अरसला ताहिर। कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। This is a fantastic catch. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. I thought I'd tell you a little bit about how Newcastle came to be so called and how it's become a city of 300,000 people with a very substantial immigrant community. It's called Newcastle because it was literally a new castle 1,000 years ago. It was built at a key crossing point of the River Tyne where the Romans had been when they were serving their wall, which still runs through the city, the centre of our city. This whole area, the Hadrian's Wall, the dividing line between the civilised Roman world and the uncivilised barbarian world, was built by legionnaires. It would appear that many of them were actually immigrants.
They were, at least some of them were from Syria, and this accounts for some people in the northeast of England who get suntans very easily. When the Romans left Britain, the wall fell into disuse, and you will find other farmsteads along Hadrian's Wall built of stone that look remarkably like the stone that went into the wall. But over the years, we have built up our city. In 1216, beg your pardon, 1216, King John, bad King John, having reneged on Magna Carta, gave more copies of the Great Charter to places around the country. And in 1216, he came to Durham, and the burghers, the merchants of Newcastle, went to see him and said, please, can we have a charter for ourselves as a city? And they paid him £100 a year. And that's when Newcastle first became a city. We grew and grew over the years, and we have had a tide of people who've come into the region. That places like Middlesbrough and Consett were nothing. There were just a few farms until they discovered iron ore, and they built those places on immigrant labour from places like Ireland who came here for a better life. And now we have immigrants coming from different countries looking for a better life. So we can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well, and they get their heads down and build their lives and build up their families, and they try to do the best for their children, and they do that through education and through giving them a work ethic. That's really important. This is the message that yesterday passes down to tomorrow. It's not just physical things, but emotional and spiritual things too. But the message that I would have for those people is, please, can you go the extra mile? Can you do more than just build for yourself? Could you help to build in your community? Can you help to contribute to our great city so that it will be here in another 1,000 years, and Newcastle will still be known for its the welcome that it gives to people from outside, for the enjoyment that people will get, the culture that we build, the sporting prowess that we build, the businesses that we build, and all of those things will help us to go through to tomorrow. This has been Robin Ashby for Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television. I look forward to talking to you again the next time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
Jamila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Kathak is one of the 8 major forms of Indian classical dance. It is considered the finest and most beautiful form of this art. These forms are really ancient. For instance, Kathak is about 2,500 years old. Now, you might ask, what is the meaning of the word Kathak? Kathak comes from the Sanskrit word katha, which means storytelling. So this dance form, which is ancient, is about telling a story. कथक की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है ये हमारे forefathers Kathak is the oldest form of dance. Our forefathers used to do this dance and it's our family tradition to practice it. All of our family members have to practice the dance
Our forefathers taught us this. Now we are teaching Kathak to our next generation. Generations को हम ये सिखा रहे हैं. Kathak dance was used to tell stories of a Hindu god Krishna and was originated from 3 districts of India called Jaipur, Banaras and Lucknow. Lord Krishna is the god of love. In Hindu mythology, there are all kinds of gods. Some are about bravery, some are about service, but he's about romance and love, about submission. So if you love somebody, you have to love like you love Krishna, with total devotion, with total subjugation. In Kathak, the expressions are most important part and it is called rasa. So there are 9 types of expressions mentioned in Natya Shastra written by Bharat Muni. So the rasas are Shrungara Veera Karuna, Adbhuta Hasya Bhayanaka, Bibhatsa Raudrau Shantascha, Kavye Navarasa Mataha. So the dancer has to implement every single rasa by dancing. Over time, Persian and Central Asian themes, such as the whirling of Sufi styles, were added to the Kathak. A good Kathak dancer is the one who is successful in expressing the spiritual ideas of their movements. This also expanded to go into places like Iran, Persia as it was called then, and it became connected with Sufism, which is a spiritual form of Islam, a very, very ancient Sufi form, which is not about ritual practices but about submission to God. खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग जीती तो भई पिया मोरे हारी तो. Dance is an art. Such an art should be preserved in its purest form, but unfortunately it is not given its due importance in this modern era, whereas it is the oldest form of dance which tells a story in a language that words can never do. People are in a hurry for entertainment. This is not about entertainment, this is about spiritual practice, this is about Sufism, and sadly those things are going as we get more and more materialist. I'm very sorry to say that. मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। वेलकम टू द शो स्ट्रीट बाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौरी बेहतर से बेहतरीन खाने की तलाश में हर वक्त रहते हैं। बारबेक्यू है, कढ़ाई है, टिक्की है, कबाब है, टकाटक है, दाल है, सब्जी है, कुरमा है, सब्जी है, मछली है, तवा पीस है। दुनिया में क्या लेने आए हैं, खाने ही आए हैं। मैंने कहा बीवियों का भी तो हक बनता है ना, ये नहीं कि क्योंकि खाली किचन में ही वो काम करे ना, तो उनको भी तो एंजॉय करवाना चाहिए ना इनको। आपका पासपोर्ट ही आपका जैकपॉट है, ऐसा जैकपॉट जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में सेटल करवा सकता है। हम आपको गाइड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, और इसके लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम सेटल अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन साउथ एशिया ग्लोब।
एक ऐसा फल है जो न सिर्फ अपने जायके और मिठास की वजह से मशहूर है बल्कि अपनी तारीख, सकाफत और फवायद की वजह से भी एक खास मुकाम रखता है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आम की तारीख कदीम जमाने तक फैली हुई है। कहा जाता है कि आम की काश्त तकरीबन 4000 साल कबल हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सकाफतों में गहराई से जुड़ा हुआ है। आम को मुख्तलिफ त्योहारों और तकारीब में भी खास अहमियत दी जाती है। कदीम जमाने के बादशाहों और शहनशाहों के दरबार में आम की पजीराई और इस्तेमाल एक आम बात थी। आम की बेशुमार इकसाम है जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद मिठास, खुशबू और जायका होता है। अनवर एटोल, सिंदड़ी, चौंसा, लंगड़ा और दुसहरी चंद मशहूर इकसाम में से हैं। आम न सिर्फ मजेदार होता है बल्कि ये गजाइत से भरपूर भी होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और दीगर गजाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। आम निज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाता है, जिल्द को निखारता है और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। में फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स जो कि बहुत कसीर तादाद में होते हैं, आज के जो गर्मी के मौसम में निज़ाम को बेहतर करने के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका जो है आपके जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए भी बहुत कारआमद साबित होता है। ये आम जो है गर्मियों का फल है, फलों का बादशाह है। बहुत ज़बरदस्त आम है। आमों का मौसम आया हुआ है, गर्मियों का मौसम है। बहुत मीठे मीठे आम आए हुए हैं। जो मौसमी फल है ये लाजमी खाया करें, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। आम का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। इसे बराह रास्त खाने के अलावा आम का रस, आम की चाट, आम का मुरब्बा और मुख्तलिफ मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। आम की लस्सी और शेक भी बहुत मकबूल हैं। आम की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आम का मौसम आता है तो लोग बेचैनी से इसका इंतज़ार करते हैं। बाज़ारों में आम की खरीदारी अरूज पर होती है और हर घर में आम की महफिलें सजती हैं। बादशाह कहना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये ना सिर्फ जायके और ग़िज़ाइयत में लाजवाब है बल्कि इसकी तारीख़ी, मुआशरती और अदबी जो तारीख़ है वो इसको बाकी फलों से मुमताज़ करती है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। पुलिस के मुताबिक शहर में तकरीबन मनशियात का खात्मा कर दिया गया। तो पुलिस ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है अगेंस्ट स्मगल्ड आइटम्स, जिसमें ये वो आइटम्स भी शामिल है जो ये गुटखा, मावा, मैनपुरियों में यूज़ होते हैं।
खुलकर आंख मेरे आईने गुफ्तार में, आने वाले दौर की एक धुंधली तस्वीर देख। सितारों की चाल या चाल का मुस्तकबिल, और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आज का कल, सिर्फ साउथ एशिया ग्लोबल टीवी पर। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आगे में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। एक तरफ आप शैतान से मदद ले रहे होते हैं, एक तरफ अल्लाह से आप मदद ले रहे होते हैं। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
schwer. Fahrradfahren. हमारी पूरी कौम को इस वक्त डंडे मार के बलोचिस्तान भेजा जाए। बहुत बढ़िया। तरबियत में कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है। ये जो फॉरेन वाला काम ठीक नहीं होता। Ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux, c'est... I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. प्रोग्राम है जमात अफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। Hello and welcome to Business ABC. कि जी क्या हमें कोई इकोनॉमिक सेलिब्रेशन मुआशी निजात भी मिलेगी कि नहीं? देखिए जो सियासत है ना वो ख्वाबों की तजारत है। जो एंकर जितना चीखती है वो उतना फेमस हो जाती है। चीखने चिल्लाने की जहाँ तक बात है, I don't find it good. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. कोई ऐसा बैट्समैन जिसको बॉलिंग करते हुए आप घबराते हो? पता है आप लोगों का जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर आजम है। करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि या तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें, ठीक है। ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। प्रोग्राम जमात अफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गजा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई। झूठ को कर्ब करने का, झूठ को दबाने का कानून है। आज एक पार्टी की हुकूमत है और 5 साल भी पूरे नहीं होते कि वो रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया। खुदा ना खास्ता मसला हो गया, कोई लोगों से अफसोस करना है, चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। अगर कड़वे घूंट ना लिए होते तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वाकई में आप कोलैप्स कर चुके थे। जब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, पूरे मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते। अब नौजवानों की इमेजिनेशन बेहतर हो गई है। तो इसी गुरूर में वो उन्होंने कुछ कहा था कि हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे आपको, लेकिन वो गुरूर तोड़ लिया हमने।
जी, आप देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट राव रमज़ान इजाज़। आज हम बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी अदब के पहले शायर हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पाकपतन में मौजूद हैं। आज हम आपको हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और औसाफ के बारे में आगाह करेंगे। अजीम रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकपतन शरीफ में है। आप मुल्तान के कस्बे खोतवाल में पैदा हुए। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन का असल नाम मसूद और लक़ब फ़रीदुद्दीन था, मगर आपने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शोहरत पाई। जब आप 5 साल के थे तो वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए। आपकी वालदा ने आपकी परवरिश की। आपने 11 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। आपने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। जब आप पाकपतन से शरीफ लाए तो यहाँ के लोग जाहिल, अजड और अनपढ़ थे। ज़्यादातर आबादी हिंदू और गैर मुस्लिम पर मुश्तमिल थी। इस वक्त के अजोदन हिंदू मज़हब की बहुत बड़ी त्रित और बुत फरोशी का मरकज़ था। लोगों की अजीब व गरीब रस्म व रवाज थे। आपने अपने अखलाक व मोहब्बत और भाईचारे से लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आपने हज़ारों अफराद, कौमों, ग्रोहों और ख़ानदानों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 25 जिलहज से 10 मुहर्रम तक रहता है। 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रात 7 बजे से लेकर फजर तक बहश्ती दरवाज़ा खोला जाता है। अदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 1.5 लाख से 2 लाख तक ज़ायरीन और अकीदतमंद बहश्ती दरवाज़ा गुजरते हैं। 5 दिन में 7 लाख से 10 लाख तक अकीदतमंद बहश्ती दरवाज़ा गुजरने की सआदत हासिल करते हैं। 781 साल गुजरने के बाद आज भी दरगाह हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तजल्लियात का मरकज़ है। अकीदतमंद यहाँ अपनी जायज़ मुरादों के असूल के लिए दुआ और दिली सुकून महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान इजाज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
Hello, Terence South again, speaking in the line of duty. We've moved now from the Falklands, conflicts, Northern Ireland, and we're out of the army and you're on your own, taking jobs on, basically contracting wherever they come, because confidence really, and what the armies give you to be able to sort problems out. So I was invited to a one-year post in China for the building of the Guangzhou and the Ring Road. That was a real good project. So we're building an elevated road in the middle of a Chinese city with all the problems that comes with it. So what came with it was, I wasn't the first guy to run the job. I was the second guy. So I was following on from someone else who wasn't a military guy, wasn't disciplined in the same way. And so as soon as I got there, it's like, I need to change things. And the problem with developing cultures is they learn one way to do things and that's it. Change management, not an easy thing. There's a lot of things to be learned about change management, and the cultural aspect is one thing that was absolutely massive, because the way you would do it in the UK is not necessarily the way you would do it in China or in Japan. I've known guys from companies like Ford who've worked in Japan, they've worked in Korea, they've set out factories, multi-million-pound projects up, and they come to China and it's like, start again. I started again when I went to Korea, I'll start again when I come to China, and they've got to learn about the culture. And one way to learn about the culture is learn the language. And that was one thing I was adamant about, and that to understand those people and be able to communicate, you need to speak the language, or at least understand it. Because believe it or not, you might be the most senior engineer in the world, but you are not in control if you have an interpreter. The interpreter is in control, because how they interpret things is to their benefit, not necessarily the project's benefit. And I'll give my analogy there. When I worked in Russia in about 96, 97, we had an interpreter called Sergey, and it was a case of, Sergey, on a weekend, we want all the materials brought to site, we move the traffic management, and that makes everything aligned. We don't want to move the traffic management and the materials arrive. We want it all to happen at one time, so we don't have materials in the middle of the road. You can imagine if you've got cars here, you fix the road, you're going to move the cars there tomorrow, and you've got all your material here, you've got to look at all across, it's no good. So nothing ever happened on time. And I couldn't understand it, I've told you, and this wagon's late. And one day we had a guy who could speak a little English, and he told us, well, what's your problem? I've delivered it as required. No, we wanted it yesterday. No, today. So we went to Sergey. Well, yeah. And he waffled and he went on and on and on. And then I was sat in a meeting in the UK, and this man's being paid by the day. So if he makes the project last longer, he benefits. But the company lose absolute thousands while he makes a few more rubles. Absolutely ridiculous. You must have someone who understands the local culture and the local language and on your side. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life.
some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. गर्मियाँ शुरू होते ही दिल खुद ब खुद ठंडे और मीठे मशरूबात की तरफ माइल होने लगता है। गर्मियों में बेशुमार मशरूबात मुहैया होते हैं, लेकिन फिर भी रवायती और ऐसी मशरूबात की मकबूलियत अपनी जगह कायम है, जिनमें सरदाई या ठंडाई सर फहरिस्त है। सरदाई गर्मियों के आगाज़ यानी अप्रैल से सितंबर के महीने तक ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है। गर्मियों के आसार नमूदार होते ही सरदाई की दुकानें सज जाती हैं। दीगर मशरूबात पर सरदाई को तरजीह देने वाले लोगों का कहना है कि सरदाई के एक गिलास के बेशुमार फ़वाइद हैं। ग़िज़ाइयत के एतबार से सरदाई कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और पोटाशियम से भरपूर होती है। तो यहाँ तंदूर भी लग चुका है और यहाँ पे रोटियाँ लग रही हैं ताज़ी ताज़ी। तो चावलों की रोटी आ चुकी है हमारे पास। मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ढाबों की रिवायात। And that's for one, but you've got to be able to speak the language yourself, even if you've got that. That just speeds things up. You can throw out, this is what I want, blah, 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 and they put the full stops and the commas in and put it right. Because that was one problem. The guy was an interpreter, he's paid by the day. We paid on the project, one lump price. He was wasting, he was throwing our money away. We were hemorrhaging money because of him. But we had to sort that out. So that's one thing about learning the language. And the other thing is that I'm in China, I've done the Guangzhou in the Ring Road, we've gone in there, we've done really well, we've gone and done Guangzhou in Donglu. Job's finished, I'm speaking Chinese, I moved to another job up in Nanjing. So I get to be a regular in Shanghai, and this guy just pulls me one day. Terence, you speak Chinese, yeah? I'll give you a job for one day. Sorry, what do you want us to do? So I want you to come and listen in one of my meetings and be my friend. So yeah, I'll do that. I'll send a car to pick you up. Okay. So I needed to go to the inner city airport for to get picked up. So in the inner city airport with a bag, this guy thought I'd go off a plane, but I hadn't. So I get picked up. This is my friend Terence. He's just flown in. Been friends for years. He's looking at setting a company up in China, and he's just sitting here to see how interpreters work and things work. At my age,
late 50s, it was unexpected that this man would speak or understand Chinese, because it's very much the young people that took it on. And so I'm sat there and conversations going on, and he's taking a floor in a building, and what he's doing is he is organising it, and he's putting where he's putting the desks, how much furniture do we need, where does he need the fire escapes, where does he need all these things, and the plan's there, it's all been priced, it's all done. And he throws a spanner in the works in the last meeting, and he says, I'd like a door here so we can shortcut through there if needed. Oh, and so I've got the builder, I've got the interpreter, I've got me sat there. So, no. And then I hears from the interpreter, how much do I get for that? What's my percentage? How much are you going to charge him? I want more than that. What? So I'm just listening. Dumb old man. Sat there. Yeah. Ooh. Well, comes out of the meeting. Everybody disappears into their office. And I says, oh, thank you very much for your time. I'm off. Oh, right. I'll see you about. And he's going, what? I'll see you later. Goes out. Gives him a text. I need to meet you at the pub. So I met him in the same pub. It was a Banana Leaf in the middle of Shanghai. Yeah, what do you want? What's up? I said, I can't talk about it in the office. I said, but your interpreter is actually stealing from you. What? No, she's been with the company years. He says, look, I'm telling you, this is what was said. She asked the contractor what percentage I get. She said, I want more than that. Well, no, this is negotiation. No, mate. This is what was said. You've paid me to interpret. That's it. Oh, okay. I said, I'm adamant. That is what was said. I said, it's not local language. This is Mandarin. It's okay, Terence. So anyway, he disappears back to his office in Australia. And I get another call from a guy who'd been in that office a lot of years before. Terence, you've said this. Yeah. I think you're right. Wow. Yeah, we got costings. They went up and up and up, blah, blah, blah. So I just got left out of it. The lady who actually was responsible was found to have a very wealthy lifestyle, well above what she could afford and her husband could afford. So working in foreign countries and doing things and learning the language is a whole sort of learning process. You've really got to be aware of who your friends are. You've really got to be careful with that. People who befriend you. Always keep your wits about you, because a number of times I've been and I've listened to what's being said and it's not what was translated. So it's difficult. It is. But China, absolutely terrific place to live. And as an older man, during those years, I got a lot of respect, basically because of my age and because of the fact that I'd learnt the language. And that's one of the problems where you get culture now. Culture comes into it where you've got one child in a family quite spoiled, yeah, because the parents dote on it, and then they do everything to help them. And you've got this ability to talk to people, and when you've got these young people coming in, some of the jobs you give them, they feel that they're below them because they've been to university, they've got a degree, but they've got no life experience and they've got no knowledge of how your industry works. They have a degree which says basically you have the tools to start in this industry, but you need to find out how it works and gain some experience. And I'll give you a story in that we were building these parts for bridges, and we fabricated them, and before very long we were copied. And so it's right, get out the market, what's the strategy? I said the strategy is dump that part of the market, we go into making and assembling and we send them abroad. We leave the Chinese market alone, other than the really big kit. Yeah, let's go with that. It's a route out of the problem we've got, because now we're in an overcrowded marketplace, we can't get our price,
our prices got to drop, which we're not going to do. But the Chinese have come in and our price is here, their price used to be there. They've copied some of what we do. Their price is now just below us and they're saying it's the same thing. Right, okay, bang, we left the market. So anyway, time goes on, we start making modular things. They go to Germany, they go to Turkey, they go to Russia, they go all over Europe. And we've got the business model now sorted. And that was my job for the company I went to work for. Resolve the problems in the factory with regards to quality and help us with the business plan. So did that. So I'm there for 3 years. I'm coming towards the end of year 2.5. And I've got this in place. We're modularising. We've left the Chinese market alone. There's a huge earthquake in the west of China. You've got bridges collapsing, you've got buildings falling down, you've got a lot of things happening that should never have happened because poor quality, copied, didn't fully understand the engineering behind this piece that we used to make. वुमेन्स आर के साथ मैं हूं अरसला ताहिर। कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. So the government comes in and says, right, we now need you to do this because the ones that's got your pieces in haven't had the same results and fall down and etc. And it's like, no, we're out of that market. We're finished. So what I'm saying is, when you go into developing a market as a Western company, you will be copied, but the full technology
They don't understand. We had some seams in the steelwork that we just put a nice little weld along the top, which actually was only there to keep the water out, so the thing became watertight. But what the Chinese had done is they'd fully welded it and said, isn't ours better than theirs? Theirs is only little, ours is huge. But ours was there, so when an earthquake come, everything snapped and it just broke up. And you could put the thing back together. But the Chinese didn't. They kept the whole of the structure bonded together, and the structure fell over instead of all the bits going, right, now you can put them back together, and you get the safety traffic across a bridge, across a structure. We can make it work again, and we don't have these huge costs in rebuilding. So copying is really dangerous, and it's something when you come into business plans and developing countries, you've really got to be aware of. And so with experience like that, I ended up being poached from there before the end of the 3 years. My job was done, everything was running. The most expensive thing at the end of the day in that Chinese factory was me. The factory was running, there was no problems, it was time to get rid of me. And when I made this public, I ended up being poached by an international company and asked to go out to Mongolia to work. And so it was like, yeah, I'll go out to Mongolia. What? Yeah, no problem, just give us a ring. Yeah, so they told me to, as soon as finishing could be done and I could extract myself from the company, they would take me on and send me out to Mongolia. So we agreed a package, I left, I kept my Chinese email address so people could write to me and I could send email back. So the way I extracted myself from the company was also something that I learned in management, in that if in China had said, I'm leaving, there would have been a void and I would have created a hole. And what happens when somebody leaves, everybody tries to fill it, and they fill it with the most awful things like, he promised this, he promised that, he said this, he said that. That's not the way we interpreted. The way we interpreted that was in this way to benefit themselves, whether that be within your own company or whether that be in a company you're cooperating with. So when you extract yourself from a company, it's got to be on the best of terms and it's got to be in a controlled manner. So what I actually did, I said, right, I'll move out with all my email addresses and all my emails will go to one person in the parent company and he can tell me what I've got to send back. And in that way, I'd gone into a company, I'd helped sort it out, I'd helped align it with quality, business plan, structure, and the separation of a joint venture into a wholly owned company. And I'd come out, nobody even knew I'd left. Nobody knew I'd gone. It was like, he's been away 2 weeks. Oh, he's gone to, I think they said I was in the Philippines. So I was in the Philippines. Where's he gone now? I think he's in Australia. And I went all these different places in theory. But in practice, I was working for another company in Outer Mongolia, sending emails round with people that didn't jump in that void and create problems which were costly to the company. So nowadays when I see people leaving companies, I'm disappointed in that professional people can leave a company and as a result leave a void behind. And if you go back to the recent conflicts like Gaddafi, as soon as you pull that guy out, vacuum. Everybody's got to fill it, everybody wants to be part of it, everybody sees it as somehow to make money. And so management change is something which is very subtle. It's not something that's a big, this is how you do it. It's very subtle. You move people around in a very quiet manner. And in the same way as when I went out to Mongolia, I didn't speak Chinese for weeks, but I was looking after 800 Chinese contractors, 800 Chinese people. And the only person that knew I spoke Chinese was the lead guy in the Chinese company. And I told him on the first day, we had a private conversation. I knew a lot of things I'd been told, and I went and told him, I was straight up front with him, this is what we believe. It mightn't be true, it might be true, but this is what we're led to believe.
and I need to fix it. And that actually having a private conversation with him gave him time to sort it out without it all becoming inflamed. So again, it's just a management style. You don't go in with a big stick. You don't put things under the carpet because they're just bumps in the road later on. You've got to have a clear playing field. You've got to be transparent about what you do. And transparency is everything. And unfortunately, when you have a joint venture, it's almost impossible to be transparent unless you have the right people and the right culture in place. So we used to say, and I come up with this saying in China with the consulate in Guangzhou and a very good friend Bob Sheed, who was the commercial guy, and we used to say a joint venture exists on paper and in people's head. A joint misadventure is what you get, and a joint venture is what you organise. A joint adventure is what you get, and a misadventure is what you had. Because when you start a joint venture, everybody wants something different out of it. And somebody, unfortunately, has got to be the leader. A joint venture of 49-51, 50-50 never works. Because you're both putting the same amount of money in, and the other person has got the one with the most shares. It might be one share, might be two shares, has got to lead it. And that will never work. Your joint venture has got to be positive, managed, and that means it's got to be 65-70% one party. Therefore, you can have leadership, and that's the way it goes. If it goes down, if it doesn't work, one party's to blame. And if not, there's a squabble. But going into business, like all business plans, you really need to put the business plan together and have how you're going to sort out conflict. Because conflict in a joint venture or in a foreign country is really difficult. So you've got to have a process, and if you have a joint venture, how you're going to wind it up. Because if you've got a joint venture, say in China or Russia or anywhere else, you're going to help that company, you're going to put your life and soul into it, because that's what you said you're going to do. Yeah, in the dream, you want to work together. But in 15 years' time, the life of that joint venture, who owns the shares? Who owns that market? Who owns that brand? All this has got to come out before you join together. So it's not an easy thing setting up a joint venture or setting up a structure in another country. So we've talked again. I'm in Mongolia. I hope to see you again. So here's me signing off, and I hope you have an enjoyable day. Thank you. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. Mama, मुझे बहुत ज़्यादा stress हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा tension हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Blow gently, O easterly, for Anarkali rests here, with dreams of Salim in her eyes. Anarkali rests here. This is the tomb of those martyred for love. Blow with respect while you're here, O breeze. May you forget, I still remember her story. I still remember the moment when she attracted his eye. Her beauty stood against the Taj. Their love stood up to the regime. Great Mughal emperors. Who haven't heard about them? Their empire included territories of almost half of the world. King Akbar got his hand on the reins of empire in 1500s. Under the rule of Akbar the Great, the empire grew considerably and consolidated its power. It was then considered to be one of the greatest empires of the world at that time. In 1526, the Mughals started proper government rule in the region of the subcontinent. Before that, there were 5 ruling dynasties, including the Slaves, the Khiljis, the Tughlaq, the Sadat, and Lodhis. The Mughals took over rule from the Lodhis. Babur is considered the founder of this dynasty, and he ruled in this region for quite some time. The Mughal era is usually divided into 2 phases. The first phase is that of the great Mughals, which is spread from Babur to the death of Aurangzeb. From Aurangzeb's death in 1707 to the War of Independence in 1857, the phase is called the latter Mughal or the declining Mughals. This way, the rule is divided into 2 distinct parts. The foundation of the empire had long gotten strong until Akbar's era. From Babur, Humayun to Sher Shah Suri's period, Hindustan had been united. Small places were united with Hindustan. The borders of the state in Akbar's rule were spread all across Hindustan. One main reason for this was Akbar's liberal attitude towards religion. He was married into different religions and different communities. He gave everyone a designation in court without any discrimination. This resulted in increased love for him by the masses and helped him become a great emperor. After King Akbar's death, Prince Salim ascended to the throne with the title of Jahangir.
He continued to follow his father's tradition, fighting battles and expanding the empire. Empire was prospering under his rule, even though he was a great warrior, but by heart a very romantic person. When we probe Mughal history, we get to know that there was no rule of succession. There was not one rule of choosing an heir, and it was always decided by power. Jahangir was lucky that he was the only child of his father. Although we understand Jahangir didn't have great abilities as an administrator, he was a good painter and architect. He had qualities connected with literature, and he also got a very established government. Akbar ruled for 50 years, and his government developed institutions that were very strong and ran well. So it was Jahangir's good luck that he had to carry it on, and even not being such a good administrator, he was able to rule very well for 27 years. Prince Salim's passionate love was an ordinary courtesan, Anarkali. Anarkali came to the subcontinent with a caravan and made her way to Akbar's court because of her beauty. She was Akbar's courtesans, or as we call in Persian, Kanis. On account of her beauty, she was given the name Anarkali, which means pomegranate blossom. Anarkali was like any other fictional character in our history, according to my research. Those were the days when we needed stories. Since there was no other source of entertainment, the only source of entertainment was the harem, and other than storytelling. We know Anarkali as a character. We do not know where she came from or what her origin was. No one knows that yet. From the time the rule of Akbar until 200 years later, Anarkali is not mentioned anywhere. Not in any book, not in any historical source. William Finch mentioned Anarkali in a travelogue he wrote when he came to the subcontinent, and his source for the story was hearsay from people. During a dance performance in the Sheesh Mahal, Prince Salim was attracted to the gorgeous courtesan Anarkali, and they fell in love. Their love was getting famous as they were seen together all the time. In traditional stories, it is said that at some point when Anarkali was serving in the court, she looked at Prince Salim smilingly. Prince Salim instantly liked her. She used to dance along with other courtesans, but Prince Salim liked her specifically. And during this time, there was no other courtesan, Dil Ara, which referred to in Imtiaz Ali's Taj's drama. She was a famous dancer and was a beloved of King and Salim. She was jealous that the Prince Salim's eyes caught Anarkali when she wanted to be his beloved courtesan. People started to poison King Akbar against Prince Salim and Anarkali. Prince Salim wanted to make Anarkali Queen of Hindustan, but King Akbar was against it, as she was an ordinary courtesan. They had several heated arguments. He was enraged. Eventually, King Akbar issued the order to execute Anarkali by encapsulating her in a concrete wall. As a historian, I believe this is fiction. It is a story. It is not related to reality in any way. The evidence behind my argument is that contemporary historians of that time never mentioned this. For example, this tragedy happened during Akbar's rule. Akbar's regime had very big historians, including Abul Fazl, who wrote Akbarnama. There were other historians, Mullah Abdul Qadir Badayuni and Nizamuddin. None of them ever mentioned any such incident about Anarkali. Mullah Abdul Qadir Badayuni was so blunt and bold that he wrote many of Akbar's drawbacks. And if any such thing might have happened, especially connected with a girl, a woman who was getting cemented alive in a wall, as mentioned in the story, he would have written about it. The thing is, Anarkali and Prince Salim first look at the atmosphere of the court and see the status of the prince.
love, infatuation, or any other courtesan would not mean anything to the prince. The harems were full and plenty of women. So such stories, there are distances between lover and the beloved. They had difficult meeting. The biggest swing in the story is why would there be love or devotion for one courtesan who is within the reach of a prince? Secondly, the story is not mentioned anywhere. Neither is it mentioned in Tuzk-e-Jahangiri, which is Jahangir's autobiography, nor does any historian at any time mention it. Although Salim and Anarkali are present in the history of the subcontinent, but people still believe it was a fictional story which started as rumors and has passed down generation to generation, while some historians go along with history and evidence of the tomb of Anarkali. Some people think about Shahzada Salim and Anarkali that this is only a myth or an imaginary story about virtual characters. I deny that. My point of view is totally different from that. I believe they were real characters and they will be remembered across the whole of history, even in the coming times. These are real characters and nothing imaginary. It is probably not possible to say that Anarkali did not exist at all. There was no such character or person at all. Anarkali might have existed. William Finch, a tourist, mentioned this when he wrote his travelogue. But when he came to the subcontinent, Akbar's rule was over and this story was told by people. And there were many versions of it, including Anarkali being killed, being cemented alive in the wall, as well as Prince Salim being madly in love with Anarkali. But historically, there is no evidence to say that this story, written by Imtiaz Ali Taj, is a true story. Some love stories live on even forever, and some die out. But love remains till eternity, just as the love story of Anarkali and Prince Salim has been immortalized over the passage of time. They became symbols of love. Even today, when people fall in love, they are referred to as Anarkali and Prince Salim. Salim said, with all his love, to his beloved Anarkali, I shall bring the stars for you, if you so wish. I shall abdicate, if you so wish. What winds were they that blew them? Salim is no more, nor is Anarkali, but this tomb bears testimony to their love, of their labor of love. Waiting for the bee lies here the bud of pomegranate tree. Blow gently, oh easterly. Not every memorial of love is a Taj Mahal. मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। वेलकम टू द शो स्ट्रीट बाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौरी बेहतर से बेहतरीन खाने की तलाश में हर वक्त रहते हैं। बारबेक्यू है, कढ़ाई है, टिक्के है, कबाब है, टकाटक है, दाल है, सब्जी है, कुरमा है, सब्जी है, मछली है, तवा पीस है। दुनिया में क्या लेने आए हैं? खाने ही आए हैं। मैंने कहा बीवियों का भी तो हक बनता है ना, ये नहीं कि क्यों खाली किचन में ही वो काम करे ना, तो उनको भी तो एंजॉय करवाना चाहिए ना इनको।
आपका पासपोर्ट ही आपका जैकपॉट है, ऐसा जैकपॉट जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में सेटल करवा सकता है। हम आपको गाइड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, और इसके लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम सेटल अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन साउथ एशिया ग्लोब। पुलिस के मुताबिक शहर में तकरीबन मनशियात का खात्मा कर दिया गया। तो पुलिस ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है अगेंस्ट स्मगल्ड आइटम्स, जिसमें ये वो आइटम्स भी शामिल है जो ये गुटखा मावा मैनपुरियों में यूज़ होते हैं। गर्मी का मौसम हो और ठंडा तरबूज ना हो, ऐसा तो सोचना भी मुहाल है। गर्मियों के लाजवाब फलों में से एक सुर्ख रंगत का ये फल छोटे बच्चों, मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों को भी बेहद पसंद है। तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो कि पानी की कमी और डिहाइड्रेशन से बचाता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। इसमें विटामिन ए, सी और B6 भी मौजूद है, जो कुव्वत मुदाफत को मजबूत बनाता है। तरबूज दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें लाइकोपीन होता है, जो दिल की बीमारियों से बचाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। ये इंतहाई कम कैलोरीज की वजह से वजन कम करने में भी बहुत मुफीद है। ये निज़ाम नहज़ाम को बेहतर बनाता है। ये ना सिर्फ आपको रिफ्रेश करेगा बल्कि सेहतमंद भी रखेगा। तरबूज का जूस कुदरती हाइड्रेशन का बेहतरीन जरिया है। अगर यूं कहा जाए कि तरबूज का हर एक बाइट आपकी सेहत को बेहतर बनाता है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। भी बिल्कुल बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी का तोड़ वाज तरबूज ही है ते सेहत वास्ते बड़ा अच्छा होंदा है ते हर खास व आम वास्ते बंदा लै भी सकता है, हर बंदे की पहुँच तक है। तो सानू चाहिए कि गर्मी के विच जरूर ट्राई करना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ हैगी है। गर्मियों का लाजवाब तोहफा तरबूज न सिर्फ जायके और मिठास में अपना मुकाम रखता है बल्कि इंतहाई सस्ता होने की वजह से हर खास व आम की पहुँच में भी है। ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। खोल कर आंख मेरे आईने गुफ्तार में आने वाले दौर की एक धुंधली तस्वीर देख। सितारों की चाल या चाल का मुस्तकबिल और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आज का कल, सिर्फ साउथ एशिया ग्लोबल TV पर।
Fahrradfahren. हमारी पूरी कौम को इस वक्त डंडे मार के बलोचिस्तान भेजा जाए। बहुत बढ़िया। तरबियत में कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है। ये जो फॉरेन वाला काम ठीक नहीं होता। Ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux, c'est... I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. प्रोग्राम है जमत अफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। Hello and welcome to Business ABC. कि जी क्या हमें कोई इकोनॉमिक सेलिब्रेशन मुआशी निजात भी मिलेगी कि नहीं? देखिए जो सियासत है ना वो ख्वाबों की तजारत है। जो एंकर जितना चीखती है वो उतना फेमस हो जाती है। चीखने चिल्लाने की जहाँ तक बात है, I don't find it good. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. कोई ऐसा बैट्समैन जिसको बॉलिंग करते हुए आप घबराते हो? पता है आप लोगों का जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर आजम है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। एक तरफ आप शैतान से मदद ले रहे होते हैं, एक तरफ अल्लाह से आप मदद ले रहे होते हैं। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। प्रोग्राम भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि या तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की।
Well, hello, it's Badge of Honour and I'm Alan Curry, continuing some of my stories of my life in the police service. I was talking just on the last episode about some issues with the press. And, you know, today we might have some views whether the press as what it was yesterday, etc. I just remember I had a local reporter who came and spoke to me once a week and wanted stories, because police stories fill newspapers, they fill the television. You all know that, whatever the country, whatever the location, you'll find a story where the police are involved, because they're news. And he always used to teach me, and he taught me, he said, what we need, Alan, he said, we need stories that are unusual or about animals. Everybody likes an animal story. And we had a couple of stories that we created there. Believe it or not, the first one, which was unusual and in some ways despicable, was the fact that we found out that a local florist who was doing flowers for funerals, after the funeral take place, generally the flowers are put around the grave, and they were going back to the grave and recovering the flowers and the mechanisms that kept the flowers together and reusing them. And that went literally, would you believe, nationally. But another one that really went nationally was, we have a local metro underground system here, and we were having lots of issues with antisocial behaviour. And we looked at problem solving, but basically, in conjunction with the authorities of the metro, we actually started playing classical music at all the stations. Now, in the nicest possible way, and I'm not up to date with any of the current day music, but guess what? Yesterday, and to a degree I suspect today's young people, were not keen on standing around metro stations when they were listening to Beethoven's symphony. So that went quite well, but I was in the office at Tynemouth about 4:45 and the telephone went. Fine, because it was, you know, a little bit everybody's got a mobile now, but there was more still telephones. We had mobiles, but not as sophisticated as they are now. So I picked the phone up, and the gentleman on the other end said, could I speak to Chief Inspector Alan Curry? I said, yeah, I'm speaking actually. Oh, he says, fine, this is Lord Smith, for obviously, I can't remember the name. And I said, yeah, that's fine. And I'm thinking, here's somebody having a joke with me, winding me up. And I said, look, who is it? And he said, no, this is Lord Smith. Are you sure? Yes, he says, look, I've heard about your initiative with the classical music, and I'm about to do a speech in the House of Lords relevant to that. Anyway, so I give him the conversation, I explain what was happening, and about 2 weeks later, he sent me a copy of Hansard. Now, Hansard is the verbatim record taken down in Parliament of both speeches made in the House of Commons and the House of Lords. And there on, for argument's sake, page 23 is Lord Smith saying, I spoke to Chief Inspector Curry in relation to classical music being played on the metro, and he replied, and I remember this because I said it, the youth of today are not disposed to be staying around police stations when classical music is played. So there you are, a little claim to fame. I actually have my name in Hansard. But moving on, and you know, I've mentioned about my parents and my father, who didn't really give me a great deal of praise, but obviously I knew he had a lot of pride in me. As I was promoted Chief Inspector, he actually said to me, and this was his response, which was really good for him, well, you must be doing something right. Well, maybe I must have been doing something right, because they moved me to the next rank, was Superintendent, and I now take on an area command within the gated area of Newcastle upon Tyne, where I'm now responsible for 250 officers. Now, I have retired, but I was asked a while ago, what was your proudest moment within the Thumbria Police? And that's always a difficult one, because I've hopefully gone through a few incidents and a little bit of my background, both family and professional life. After 35 years in the organisation, there's one incident that sticks out as probably being my proudest moment.
प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गजा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई। झूठ को कर्ब करने का, झूठ को दबाने का कानून है। आज एक पार्टी की हुकूमत है और 5 साल भी पूरे नहीं होते कि वो रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया। खुदा ना खास्ता मसला हो गया, कोई लोगों से अफसोस करना है, चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। अगर कड़वे घूंट ना लिए होते तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वाकई में आप कोलैप्स कर चुके थे। जब तक जहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, पूरे मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते। अब नौजवानों की इमेजिनेशन बेहतर हो गई है, तो इसी गुरूर में वो उन्होंने कुछ कहा था कि हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे आपको, लेकिन वो गुरूर तोड़ लिया हमने। BISP सेंटर गुरुचक में करप्शन और माली बेजाब्तगियां अरूज पर। जराये के मुताबिक BISP सेंटर में रात गए टोकन और ID कार्ड्स का गैर कानूनी असूल जारी है। रिटेलर्स रात गए मखसूस खवातीन के घरों में जाकर इनसे टोकन और ID कार्ड्स ले लेते हैं। सुबह के वक्त फकत यही कार्ड स्कैन करके इनको पेमेंट की जाती है, जिनसे मनपसंद रेट के मुताबिक 500 से 2000 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, जबकि बाकी खवातीन खाली हाथ रह जाती हैं। खवातीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 15 दिनों से BISP सेंटर पर रोजाना आती हैं, लेकिन इन्हें हर बार ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि इनके कागजात मुकम्मल नहीं हैं या इनके टोकन की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि सिफारशी और मनपसंद टोकन वाली खवातीन को पेमेंट कर दी जाती है। ज़ईफुल उम्र खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर रोज आने वापस भेज दिता किराया मंग तो लिया पैसे गरीब बंदे सानू 2-2000 3-3000 पैसे देने। मेरा बच्चा हस्पताल पिया हो 21 तरीक दी मैं आंदी पई है तक देख लो बिकी किन्ने पैसे बंडल मेरे आवन जावन दे हर रोज तू मैं आनी तैनूं पिछा हटा देंदे। कमरे च बह के साडे कोल नहीं साडा बयान कर रहे, ना सानूं पैसे दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं साडे कोल ते असीं आने कमरे च भौं भौ के चले जाने। ये 500 रुपया लै रहे हैं, सानूं नहीं पैसे किसी दे ज्यादा मिलते हैं जे दे लै रहे हैं। ते असीं गरीब बच्चे लिया के ते बह के ते इन्हां ने साडे कार्ड तुसीं पकड़ो ते इन्हां साडे कोई नहीं इंसाफ कीता। जैसा कि खवातीन का कहना था कि हम यहाँ BISP प्रोग्राम के एवज मिलने वाले अपने पैसे वसूल करने के लिए आती हैं, लेकिन हमें रोजाना जलील किया जाता है। हमारे साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ना पानी का कोई मुनासिब इंतजाम है और ना ही कोई मुनज़्ज़म तरीकाकार है। जबकि BISP सेंटर के असिस्टेंट अफसर रांझा के मुताबिक हम अगर शिकायत पर रिटेलर्स की डिवाइस ब्लॉक करवाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाइस दोबारा एक्टिवेट करवा लेते हैं। और इतने बड़े सेंटर्स पर हमें सिक्योरिटी के भी काफी इश्यूज हैं और इतनी तादाद में आई खवातीन के लिए सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद है, जो कि नाकाफी है। जी एक कंप्लेन आई सी कि एक बीबी थंब लगवा रही है और पैसे कह रही कि मैं घर जाके देवांगी। वो अगर घर जाके देंदी तो मर्जी की गल है भी जिन्हें भी मर्जी दे सकती सी, किसी जिन्हें मर्जी रखे। उस टाइम इतने AC सन नासर साहब उन्होंने ट्रांसफर हो गया मिंचनाबाद, उन्होंने उस टाइम वो डिवाइस जी है ब्लॉक करवाई है। 3 दिन तो बाद वही रिटेलर दोबारा डिवाइस इशू करवा के इतने काम कर गए। जामिया की तरफ से हमें इधर जो नफरी है कम से कम कोई 10-15 जो है पुलिस वाले एहलकार जो है उनकी ज़रूरत होती है। वो इधर सिर्फ एक कांस्टेबल है और 2 लेडी कांस्टेबल होती हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा इधर पानी का भी जो है कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारी तरफ से ये होता है कि हमने इनको टोकन इशू करना होता है और टोकन के ऊपर लिखना होता है कि इस बीबी की अमाउंट कितनी है, ताकि वो पूरी अमाउंट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन हम उनको टोकन बना के दे देते हैं। 5 यहाँ पे रिटेलर आते हैं पैसे देने के लिए। उनका कभी कोई नेट का इशू होता है, कभी किसी का फिंगर का कोई इशू होता है। जो भी इश्यूज़ हैं वो इन रिटेलर हजरात की तरफ से हैं और ऐसी बीबियाँ भी हैं जिनके पास 10-10, 15-15 दिन के टोकन मौजूद हैं और उनको अभी तक जो है पेमेंट नहीं हुई। BISP सेंटर गुरुचक, जहां खवातीन अपने रोज़मर्रा के कामों को पसे पुश डालकर सिर्फ ये उम्मीद लेकर आती हैं कि आज इनको भी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद मिल सकेगी और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेगी, लेकिन कोई भी मुनज़्ज़म तरीक़ाकार ना होने की वजह से वो शाम को फिर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन।
Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. Here I am again as a superintendent, would you believe? And again, the skills you've learned, the leadership, the management, the organisational perspectives of how you manage these type of things. And as a superintendent, once again, the role requires new skills and new learning. So now I have to learn how to be what they call a silver commander. You've seen it on the television where officers are policing protests or different aspects of different instances occur. But behind there is a communication structure and a leadership structure. So I'm not going to be on the actual front line, but I am directing how the process and things are working. So as a silver commander, I have responsibility both for firearms incidents that occur, both spontaneously and what we call pre-planned. And I also have a public order responsibility as a silver commander as well. New skills, new learning. From the silver commander perspective of a public order superintendent, I had to go down to Birmingham. And down there, by the time I'd got kitted up with my crash helmets and different aspects of fire retardant overalls, I had to go through a training course that involved being firebombed, believe it or not, being put under pressure by gangs of youths who were brought in, bussed in, and they really did enjoy throwing the wooden bricks at the police because that sort of replicated as best we could the situations you find yourself in public order. And within that, I was designated the silver commander and had to learn how to manage the situations. We also went to a locality down here, an army base really, Catterick, where again we were in a disused town area where we were firebombed, burnt out cars, bricks thrown at us and all the rest of it. So not only did I direct it, I was also put through the situations where I understood what my officers were going to go through. The same issue occurs in relation to a silver commander as in relation to firearms. I don't know how to fire a gun, but I end up taking the responsibility for the tactical options. So if there's a spontaneous firearms situation, we have officers in all parts of the country who will be driving cars which have firearms on them as an instantaneous response to any firearms incidents. It's easy to just replicate when you've seen and heard over the last few years of terrorist incidents, particularly in London, where people have been shot
But as the first officer's on the scene, that's a spontaneous response. There's no time to plan, do whatever. If we have intelligence and information about issues where there are likely to be either somebody we want to arrest or an incident to take place where firearms, then you have time to pre-plan it and work out what your tactics are going to be. And what we have is firearms advisors. And the firearms advisors always come to the superintendent. They give me, in this situation, the options, and I then have to make the decision. And if it's the right decision, great. And if it's the wrong decision, it'll be me in court who has to consider why I made certain decisions. I recall one where we knew we wanted somebody who was a violent criminal. He was wanted for an armed robbery at a bank. We knew where he lived, but we didn't want to go into the premises in case he had a gun. It was about how we managed. So I had armed officers, and I also had a surveillance team, plainclothes officers, watching this particular house. And I have to say, he was the most boring bank robber I've ever met. He never left the house for 3 days. So for 3 days, I sat in a car park at a local supermarket with 3 marked police vehicles, 2 unmarked police vehicles, and people watching the scene. And would you believe I was going to say the gentleman, but the individual we were looking for came out of the house with his wife and went to the local hospital. And I knew the place, that was where I was an inspector. So I knew the place as like the back of my hand. And what it turned out was his wife had fallen down the stairs and broken her ankle. We subsequently broke her ankle, and he took her to hospital where we were able to arrest him in the street. And in the nicest possible way, because I believe in this, he was sentenced to 14 years in prison for the armed bank robbery. So they're things that occur, and that's how I learn. And then of course, they're the operational roles I have responsibility for. But back to all the things I've told you before as you progress, I still have 250 officers who have their own little problems, have their own daily crisis, keep coming to me when there's a problem, management of the situation. Now I've got a community involvement. Gateshead has the largest Jewish Orthodox community, and I had some great relationships with individuals there, making sure that we all lived peacefully together, or as peacefully as one can. And then, not least of which, let's go back, I'm now a superintendent, but guess what? My wife got a rank as well. She wanted to be a chief superintendent. So once again, I've still got a boss, but I've got another boss.
This is a fantastic catch. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. You've got me now as a superintendent. I've hopefully explained, once again, each rank brings its own pressures, responsibilities, dare I say, successes. Because there's nothing better from a police officer's point of view, bringing a case, no matter how big or how small, to a successful conclusion. And that conclusion for me is actually getting to the stage where the case has been proven and the individual is left to the courts to be sentenced. I was brought up never to criticise the sentence, and that's the magistrate's part. My job's to get them there and get them convicted. So, as a superintendent, and it's nearly 20 years ago now, it was Boxing Day in Leeds. 2 police officers on duty. Now, public holidays in this country for policing should be, and generally are, pretty quiet. Most people are enjoying themselves, most people are in the house, there's very little traffic on the road. So these 2 officers are working a bank holiday and they stopped a car. For whatever reason, it's just a police incident. See things, you're nearly brought up to think that's not right. So they stopped this car, and when they stopped it, they saw that it had an excise licence which didn't seem to fit the vehicle. Standard police procedure, they put the driver of the vehicle in the back of the police car. But they thought there was something not quite right, so they asked for a little bit of assistance, and one of the local Panda lads came along. So now we've got 3 police officers and this individual in the back of the car, and his name, what I now know, we know, is David Francis Beaver. What they didn't know was that he had an automatic handgun in his hand, or concealed. And as they went to talk to him in the back of the car, he shot one police officer point blank, who died instantly. And as the other 2 ran away, because who wouldn't, they weren't armed, he shot them both. They managed to get away, and as so did he. Now, if there's anything worse in this country, or any country, but particularly in England, bear in mind the police officers are generally not armed, it's the fact of killing a police officer. Well, no, the force involved was West Yorkshire, and as a consequence, and we've said before when we talked about the press, police involvement is news,
you can imagine what was happening in the country in relation to a murdered police officer. It was one of the largest manhunts in this country at that time, and possibly even subsequently. And this individual, who they didn't know who he was, but ultimately managed to find out that he originated in America and he was wanted for murder in America, was on the run. There was every newspaper, every television place, have you seen this man? Remember what I said about the press and the core message? Pictures, discussions, his original picture, everywhere. So 3 days later, I am the duty superintendent in Newcastle. And I get a telephone call from a member of staff. And believe it or not, it was my own area, so they rang me up and explained that they think they've seen this man in a local public house in Gateshead. Now bear in mind, the whole world is looking for this chap, and the hostelry we're talking about was a place where workmen would stay. So you assume that it's probably a false sighting, but that's not the way we're taught, the way I was brought up, and we're now into what I described before as a pre-planned firearm operation, and it's 12:30 at night. So as a consequence, I put together a firearms team. So you bring your staff together. I've got unarmed officers, and at every pre-planned meeting you do a briefing. The tactics were very simple. We could wait till the morning, but if you're in the morning, you've got members of the public maybe going to school, going to work, etc. Maybe not school, but work. You could just leave it, knock on the door, don't do anything. But if it was the person we're talking about, that could be dangerous. Or alternatively, we could do it at 12:30 at night, very few people around, nothing to worry about. We knew the facility. It was a 1-bedroom bedroom with a sink in. And if the gentleman involved didn't want to come out, we have a siege, and it's not a problem. We can stay there as long as we want. He's going to go nowhere. Anyway, we put them together. The tactics were very simple. We put what we call an outer cordon of unarmed officers. We put an inner cordon of firearms officers, and then we sent armed officers in to knock on the door, in the best way. Now, you will have seen all the television programs of armed officers, and none of them are quiet. It's about being assertive, aggressive. It's about making sure you know who is in charge, and that's exactly what they did. The issue for me is, I'm in charge, I've had to organise it, I'm responsible, I say go, and if anything goes wrong, it's my fault. That's what you sign up for. Anyway, they knocked on the door, and I got the call on the radio, nothing's happening. And then the door opened, they put this guy on the floor, and it turned out to be David Francis Bieber. You wouldn't believe, to this day, we still don't know why he's there. He's never spoken to the police. We've now just arrested the most wanted man in England, and possibly the world, but definitely let's just say England. And now we've got a whole different scenario of how you manage. And this is where a lifetime of policing skills, learning the role through different ranks comes together. Because you don't go into the room, we just sealed it. We didn't know, I didn't know what the forensic strategy of West Yorkshire was for. They need to do that. So I know we need to seal the place, seal the room. I know the officer involved have to take this individual to one of our terrorist holding locations, which is exactly what we did do. He's arrested. Eventually, people will work out what's happening. But there's two parts to this. One, the fact it came to a successful conclusion is hopefully what I trained for all my life. It hopefully builds upon everything I've talked about from joining the job at 19 to being a superintendent some 30 years later, of all the skills, abilities, leadership and management came to fruition on that one night of management and working with it. And the other thing that always, when I said if anything goes wrong, when they investigated the room for the forensic strategy, the gun he used to murder the police officer was under the pillow, loaded and ready to fire. If I hadn't worked the way I did on that night and just sent a police officer to knock on the door and say, excuse me, that officer would be dead now, and I'd still be asking questions. So when it comes back to the final part, maybe my proudest moment, yes, being involved in managing the arrest of that individual, but it also culminates in the end of 32 years of being a police officer and all the skills and I learned through that period of time. I will be seeing you again
on South Asia TV. Thank you very much. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. तो यहाँ तंदूर भी लग चुका है और यहाँ पे रोटियाँ लग रही हैं ताज़ी ताज़ी। तो चावलों की रोटी आ चुकी है हमारे पास। मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ढाबों की रिवायात।
एक ऐसा फल है जो न सिर्फ अपने जायके और मिठास की वजह से मशहूर है बल्कि अपनी तारीख, सकाफत और फवायद की वजह से भी एक खास मुकाम रखता है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आम की तारीख कदीम जमाने तक फैली हुई है। कहा जाता है कि आम की काश्त तकरीबन 4000 साल कबल हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सकाफतों में गहराई से जुड़ा हुआ है। आम को मुख्तलिफ त्योहारों और तकारीब में भी खास अहमियत दी जाती है। कदीम जमाने के बादशाहों और शहनशाहों के दरबार में आम की पजीराई और इस्तेमाल एक आम बात थी। आम की बेशुमार इकसाम है जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद मिठास, खुशबू और जायका होता है। अनवर एटोल, सिंदड़ी, चौंसा, लंगड़ा और दुसहरी चंद मशहूर इकसाम में से हैं। आम न सिर्फ मजेदार होता है बल्कि ये गजाइत से भरपूर भी होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और दीगर गजाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। आम निज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाता है, जिल्द को निखारता है और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। में फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बहुत कसीर तादाद में होते हैं, आज के जो गर्मी के मौसम में निज़ाम को बेहतर करने के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका जो है आपके जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है। ये आम जो है गर्मियों का फल है, फलों का बादशाह है। बहुत ज़बरदस्त आम है। आमों का मौसम आया हुआ है, गर्मियों का मौसम है। बहुत मीठे मीठे आम आए हुए हैं। जो मौसमी फल है ये लाजमी खाया करें, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। आम का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। इसे बराह रास्त खाने के अलावा आम का रस, आम की चाट, आम का मुरब्बा और मुख्तलिफ मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। आम की लस्सी और शेक भी बहुत मकबूल हैं। आम की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आम का मौसम आता है तो लोग बेचैनी से इसका इंतज़ार करते हैं। बाज़ारों में आम की खरीदारी अरूज पर होती है और हर घर में आम की महफिलें सजती हैं। बादशाह कहना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये ना सिर्फ जायके और ग़िज़ाइयत में लाजवाब है बल्कि इसकी तारीख़ी, मुआशरती और अदबी जो तारीख़ है वो इसको बाकी फलों से मुमताज़ करती है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। आर के साथ मैं हूं अरसला ताहिर। कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health. जी, आप देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट राव रमज़ान इजाज। आज हम बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी अदब के पहले शायर हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पाकपतन में मौजूद हैं। आज हम आपको हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और औसाफ के बारे में आगाह करेंगे। अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकपतन शरीफ में है। आप मुल्तान के कस्बे खोतवाल में पैदा हुए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन का असल नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था, मगर आपने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शोहरत पाई। जब आप 5 साल के थे तो वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए। आपकी वालदा ने आपकी परवरिश की। आपने 11 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। आपने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। जब आप पाकपतन से शरीफ लाए तो यहाँ के लोग जाहिल, अजड और अनपढ़ थे। ज़्यादातर आबादी हिंदू और गैर मुस्लिम पर मुश्तमिल थी। इस वक्त के अजोदन हिंदू मज़हब की बहुत बड़ी त्रित और बुत फरोशी का मरकज़ था। लोगों की अजीब व गरीब रस्म व रवाज थे। आपने अपने अखलाक व मोहब्बत और भाईचारे से लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आपने हज़ारों अफराद, कौमों, ग्रोहों और ख़ानदानों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 25 जिलहज से 10 मुहर्रम तक रहता है। 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रात 7 बजे से लेकर फजर तक बहिश्ती दरवाज़ा खोला जाता है। अदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 1.5 लाख से 2 लाख तक ज़ायरीन और अकीदतमंद बहिश्ती दरवाज़ा गुजरते हैं। 5 दिन में 7 लाख से 10 लाख तक अकीदतमंद बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने की सआदत हासिल करते हैं। 781 साल गुजरने के बाद आज भी दरगाह हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तजल्लियात का मरकज है। अकीदतमंद यहाँ अपनी जायज मुरादों के असूल के लिए दुआ और दिली सुकून महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान इजाज, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साउथ एशिया ग्लोबल टीवी पाकपतन। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
Fahrradfahren. हमारी पूरी कौम को इस वक्त डंडे मार के बलोचिस्तान भेजा जाए बहुत बढ़िया तरबियत में कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है ये जो फॉरेन वाला काम ठीक नहीं होता Ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux, c'est... I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. प्रोग्राम है जमत अफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल. Hello and welcome to Business ABC. कि जी क्या हमें कोई इकोनॉमिक सेलिब्रेशन मुआशी निजात भी मिलेगी कि नहीं? देखिए जो सियासत है ना वो ख्वाबों की तजारत है. जो एंकर जितना चीखती है वो उतना फेमस हो जाती है. चीखने चलाने की जहाँ तक बात है, I don't find it good. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. कोई ऐसा बैट्समैन जिसको बॉलिंग करते हुए आप घबराते हो? पता है आप लोगों का जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर आजम. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
हूँ आपकी होस्ट वजिया खालिद। वेलकम टू द शो स्ट्रीट बाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौरी बेहतर से बेहतरीन खाने की तलाश में हर वक्त रहते हैं। बारबेक्यू है, कढ़ाई है, टिक्की है, कबाब है, टकाटक है, दाल है, सब्जी है, कुरमा है, सब्जी है, मछली है, तवा पीस है। दुनिया में क्या लेने आए हैं, खाने ही आए हैं। मैंने कहा बीवियों का भी तो हक बनता है ना, ये नहीं कि क्योंकि खाली किचन में ही वो काम करे ना, तो उनको भी तो एंजॉय करवाना चाहिए ना इनको। BISP सेंटर गुरुचक में करप्शन और माली बेज़ाब्तगियां अरूज पर। ज़राए के मुताबिक BISP सेंटर में रात गए टोकन और ID कार्ड्स का गैर कानूनी असूल जारी है। रिटेलर्स रात गए मखसूस खवातीन के घरों में जाकर इनसे टोकन और ID कार्ड्स ले लेते हैं। सुबह के वक्त फकत यही कार्ड स्कैन करके इनको पेमेंट की जाती है, जिनसे मनपसंद रेट के मुताबिक 500 से 2000 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, जबकि बाकी खवातीन खाली हाथ रह जाती हैं। खवातीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 15 दिनों से BISP सेंटर पर रोजाना आती हैं, लेकिन इन्हें हर बार ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि इनके कागजात मुकम्मल नहीं हैं या इनके टोकन की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि सिफारशी और मनपसंद टोकन वाली खवातीन को पेमेंट कर दी जाती है। ज़ईफुल उम्र खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्ची है कि हर रोज आने सानू वापस भेज दिता है, किराया ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 2-2000 3-3000 ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦਨ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣੀ ਤੇ ਪੈਨ ਪਿਛਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੌਂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इंसाफ किया। जैसा कि खवातीन का कहना था कि हम यहाँ BISP प्रोग्राम के एवज मिलने वाले अपने पैसे वसूल करने के लिए आती हैं, लेकिन हमें रोजाना जलील किया जाता है, हमारे साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ना पानी का कोई मुनासिब इंतजाम है और ना ही कोई मुनज़्ज़म तरीकाकार है। जबकि BISP सेंटर के असिस्टेंट अफसर रांझा के मुताबिक हम अगर शिकायत पर रिटेलर्स की डिवाइस ब्लॉक करवाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाइस दोबारा एक्टिवेट करवा लेते हैं, और इतने बड़े सेंटर्स पर हमें सिक्योरिटी के भी काफी इश्यूज हैं, और इतनी तादाद में आई खवातीन के लिए सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद है, जो कि नाकाफी है। जी एक कंप्लेन आई सी कि एक बीबी थम लगवा रही है और पैसे कह रही कि मैं घर जाके देवांगी। वो अगर घर जाके देंदी तो ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਸਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 3 दिन तो बाद वही रिटेलर दोबारा डिवाइस इशू करवा के थे काम कर रहे हैं। जामिया की तरफ से हमें इधर जो नफरी है कम अज़ कम कोई 10-15 जो है पुलिस वाले एहलकार जो है उनकी ज़रूरत होती है। वो इधर सिर्फ एक कांस्टेबल है और 2 लेडी कांस्टेबल होती हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा इधर पानी का भी जो है कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारी तरफ से ये होता है कि हमने इनको टोकन इशू करना होता है और टोकन के ऊपर लिखना होता है कि इस बीबी की अमाउंट कितनी है, ताकि वो पूरी अमाउंट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन हम उनको टोकन बना के दे देते हैं। 5 यहाँ पे रिटेलर आते हैं पैसे देने के लिए। उनका कभी कोई नेट का इशू होता है, कभी किसी का फिंगर का कोई इशू होता है। जो भी इश्यूज़ हैं वो इन रिटेलर हजरात की तरफ से हैं, और ऐसी बीबियाँ भी हैं जिनके पास 10-10, 15-15 दिन के टोकन मौजूद हैं और उनको अभी तक जो है पेमेंट नहीं हुई। BISP सेंटर गुरुचक, जहां खवातीन अपने रोज़मर्रा के कामों को पसे पुश डालकर सिर्फ ये उम्मीद लेकर आती हैं कि आज इनको भी हुकूमत की जानब से मिलने वाली इमदाद मिल सकेगी और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेगी, लेकिन कोई भी मुनज़्ज़म तरीक़ाकार ना होने की वजह से वो शाम को फिर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन।
आपका पासपोर्ट ही आपका जैकपॉट है, ऐसा जैकपॉट जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में सेटल करवा सकता है। हम आपको गाइड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, और इसके लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम सेटल अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन साउथ एशिया ग्लोब। Bismillahirrahmanirrahim. Mental health, one of the most important topics these days. In fact, it's the buzz of the world. And if I give you some statistics, you will be surprised that 1 after every 4 people are suffering from mental health these days. Why is it important to have therapy? What are the benefits of therapy? When is it the need that you have to see a therapist? What is therapy and what are the different kinds of therapies that are out there? To know all about this and much more, stay tuned with us today on Soul Solutions. I'm Rahila Ahmed. I'm a personality coach, a Reiki master, a psychotherapist, a yoga teacher, and a numerologist. And today, to talk about mental health and to give you awareness about therapy and how therapy really works in your life and what changes therapy can bring in your life and how it can actually help in dealing, to know all about mental health and what wonders therapy can do for you. Today in the program, I'm extremely grateful to Miss Areed Jawad, who has joined me on my special request, and she will share her experiences and her journey into therapy. I would like to introduce her to all of you because what she has done is actually inspirational. She is the mother of 2 kids, and after 10 years in marriage, she did her MPhil in English literature, and she is also working as a research writer. So let's all welcome Areed and meet her today. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Areed. How are you doing? I'm good, thank you. Thank you for the lovely introduction. Thank you so much for taking out time, and honestly, the courage that you showed to come here and talk about mental health. And when I asked Areed to come to the show, she instantly agreed because she also wanted everyone to benefit from the journey of therapy that she had. So thank you, Areed. Thank you so much for inviting me over here, because there's a lot to my journey that I wanted to share. Okay, I'm so glad, and we will actually be interested in knowing all about it. But initially, I would want to ask you one thing, that what made you think that you need therapy? What was the motivating factor or the driving factor, or when in your life a point came when you thought that I will go for therapy? Just for a little backdrop, I have 2 kids, and with the first one I went through postpartum depression, but I ignored all the symptoms and I kept thinking this is normal and this happens to every woman. Just like everyone else in our society does. Yes, because I did talk to some elders also and they said it's normal. So just, pray to Allah, pray 5 times a day and you will be fine after that. उन्होंने कहा होगा बेटा तस्बीह करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी. That's true. So fast forward, I had another kid, and after that things escalated drastically.
I started having panic attacks, anxiety, depression, and then I asked my gynecologist as well that these are the things that I'm experiencing. Is this really normal? And she also, sort of brushed it off, saying, "हाँ, ये नई माँओं को होता है." So she put me on antidepressants for like 2 months, and I started taking them. Okay. I felt instantly fine. मुझे लगा कि मैं तो हवाओं में उड़ रही हूँ. तो उसके बाद when I stopped taking the medicine, it was back to square one. मैं पब्लिक में निकल रही हूँ, मुझे वहाँ पे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, मैं घर पे बैठी हुई हूँ, वहाँ पे मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, to the point that I started feeling that I'm not capable enough to look after my kids. तो उस वक्त as a last resort, me and my husband, we decided that I need to try therapy now. तो फिर I joined you. Yeah. And then that's from where the journey began. Yeah. I'm so glad that you brought it up, that you also discussed it with your gynecologist, and your gynecologist also brushed it up कि ये तो नई माँओं को होता है. And by the way, this is actually so alarming that even our doctors don't take it seriously, and postpartum depression is something very, very real, and it can lead to serious consequences in our life. And I'm so glad that you brought it up. And anyone after pregnancy, if you are dealing through such symptoms that you are feeling extremely bad about yourself, there is low self-esteem, you're crying, you're not liking your baby, these are all signs and symptoms of postpartum depression. Right, Areej? Yeah, it was a very bleak time. Yeah. I felt suicidal. That I'm was so very sorry. intense. Yeah, it seems really, and it's actually very difficult and excruciating for the mother who is going through this. And on top of it, when everyone completely dismisses that कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस दुआ करो, नमाज पढ़ो, and also they guilt trip you कि तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, तुम अपने बच्चे को नहीं देख रहे हो, which even worsens this, the whole symptoms. That's true. Yeah, so Areej, I remember when you came to therapy, I felt that there was a very little girl who came to therapy and who was kind of holding her husband's hand, and she was extremely fearful, and that's from where the journey began. So initially, as you mentioned, that when it was the last point where you could not function, that's where you decided to come to therapy, right? Yeah. And normally what happens in our society is that is where people come to therapy. And I would also want to add on for the viewers that whenever you start seeing early signs, for example, if you're not able to function well, if you're going into long periods of hopelessness and helplessness, if your sleep is getting disrupted, if you are not able to emotionally regulate, and in that case, if you are having mood swings, extreme high anger or extreme sadness, or you are falling into bouts of depression, or you are crying regularly, or your daily functions, like you're not able to function properly, you get tired easily, you get fatigued, you get zoned out. These are all the early signs and symptoms where you feel that you should go and talk to a therapist. Right? And then you also mentioned that you took some antidepressants. For how long did you take antidepressants? First place में I think for 2 to 3 months, and then I stopped taking them. अच्छा. Because On your own? on my own. Okay. क्योंकि एक वो वहम आ गया कि since I'm feeding my child, I shouldn't be taking antidepressants. और फिर मैंने छोड़ दिया. उसके बाद I started visiting a psychiatrist, and then he put me on the same medication for like 9 months. Okay. And then when I started feeling better, so he weaned me off those medications. Okay, that is the So healthy it was way like of weaning a off. year and a half maybe that I Okay. was on that particular medicine. Okay, so here I would like to tell all of you that medicines also help, but it's very important to see a psychiatrist and keep continuing going to the psychiatrist, and don't leave medicines on your own because they can backfire too. So we will discuss all more about it, and we will also go deeper into the journey of your therapeutic journey, basically how therapy affected you and what changes did therapy bring in you. All this and much more after this short break. So stay tuned.
पुलिस के मुताबिक शहर में तकरीबन मनशियात का खात्मा कर दिया गया। तो पुलिस ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है अगेंस्ट स्मगल्ड आइटम्स, जिसमें ये वो आइटम्स भी शामिल है जो ये गुटखा मावा मैनपुरियों में यूज़ होते हैं। गर्मियाँ शुरू होते ही दिल खुद ब खुद ठंडे और मीठे मशरूबात की तरफ माइल होने लगता है। गर्मियों में बेशुमार मशरूबात मुहैया होते हैं, लेकिन फिर भी रवायती और ऐसी मशरूबात की मकबूलियत अपनी जगह कायम है, जिनमें सरदाई या ठंडाई सरे फहरिस्त है। सरदाई गर्मियों के आगाज़ यानी अप्रैल से सितंबर के महीने तक ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है। गर्मियों के आसार नमूदार होते ही सरदाई की दुकानें सज जाती हैं। दीगर मशरूबात पर सरदाई को तरजीह देने वाले लोगों का कहना है कि सरदाई के एक गिलास के बेशुमार फ़वाइद हैं। ग़िज़ाइयत के अतबार से सरदाई कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और पोटाशियम से भरपूर होती है। Welcome back after the break. I'm sure by now you must be intrigued about therapy and mental health and also by Areed's journey. So let's just quickly ask Areed more about her journey and how did therapy brought her out of that dark phase in life. So Areed, how was your journey? How did the whole thing start and what were your feelings initially, and just tell us all about your journey. Like I mentioned earlier कि मैं therapy में आई थी thinking it as a last resort, and I started therapy not with a lot of faith and hope, thinking कि अच्छा चलो इसको भी try करके देख लेते हैं कि क्या ही होगा. Exactly. तो when I initially joined therapy, I wanted clear timelines कि मैं कितनी देर में ठीक हो जाऊंगी और miracle कब होगा, and 2-3 weeks into therapy I was very frustrated कि कुछ हो क्यों नहीं रहा. और in fact इनिशियली आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं तो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा मेरा फेस जो है वो ख़राब हो रहा है, मैं और डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रही हूँ. आई एम मोर स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग. व्हाई इज दिस हैपनिंग? देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस एंड केओस एंड कंफ्यूजन. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन इनिशियली कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मैं ठीक हो रही हूँ. तो आफ्टर some time, maybe 3-4 months, things started to settle down. फिर बीच में आता था time when I started losing my patience कि नहीं बस एक यूं करके आप कुछ करें और मैं ठीक हो जाऊं. तो लेकिन ये कि it took a lot of time and patience and I must say courage on my part as well. Of course. और लंबी थी जर्नी, but I feel it's
long lasting. Yeah. So I would like to add it here, Reach, like you said कि मुझे frustration होनी शुरू हो गई, बल्कि मुझे लगा मैं worse हो रही हूँ. So that is what I want to tell all our viewers, that you need to understand that when you go into therapy, why therapy, lots of people, if you talk to them, they might be saying that therapy doesn't work. I want to tell people that therapy works, and you are a living example of it, but you need to be patient. We are impatient as not a nation, but as human beings. Human beings are impatient creatures. So we want quick fix of everything. But remember कि जो भी इमारत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जिसकी होती है उसकी बुनियादें टाइम लेती हैं. एंड और नेचर में भी ये है, जब आप एक सीड उगाते हैं अगले दिन आपको फ्रूट नहीं मिलता. यू हैव टू वेट पेशेंटली. 6 माह इंतजार करता है, दरख्त बनता है, फल लगता है, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं. लेकिन थेरेपी में हम कहते हैं कि फौरन रिजल्ट्स आए. एंड सेकेंडली, जैसे आपने मेंशन किया कि इनिशियली आपको बुरा लग रहा था कि वर्स हो रही हूँ मैं, और वो वर्स होने का मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद बताएं कि बाद में आपको समझ आई, और आपको क्या समझ आई कि इनिशियली आपको क्यों इतना वर्स फील हो रहा था. I think इसका कंपैरिजन एक ओपन वूंड से किया जा सकता है. When it gets infected, आपको कोई चोट लग जाए, आप डॉक्टर के जाएंगे तो वो उसको पहले साफ करेगा, और जब उसको वो साफ करेगा तो it's going to sting, it's going to be very painful. अब अगर आप उसको छोड़ दो कि डॉक्टर सिर्फ मरहम पट्टी ना करे और ये ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे दर्द होगा, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बहुत गलत होगा. Absolutely. तो मुझे ये लगता है कि जो इनिशियल फेज था जिसमें मज़ीद मुझे लगता है कि मेरी एंजाइटी ज़्यादा हो गई थी ट्रिगर, वो इसलिए थी कि बहुत सारा सप्रेस्ड इमोशन था अंदर से जो बाहर निकल रहा था. और वो सारा रिप्रेस्ड इमोशन वो था जो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ. तो वो जब बाहर निकला तो इट वाज अ शॉक टू मी एज वेल कि मेरे अंदर क्या क्या छुपा हुआ था, कौन से ट्रॉमा है. थेरेपी टाइम लेती है क्योंकि हम खुद से नहीं हमें पता चलता. और आपने देखा होगा कि इवन 1 year later into therapy इस तरह की चीज कोई बाहर निकली जिसका पहले आपको अंदाजा खुद भी नहीं था. वो इसी तरह ही है ना कि आपने एक अलमारी में कपड़े आप ठोसते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप अलमारी खाली करना शुरू करते हैं और चीजें निकालते हैं तो फिर नीचे आपको लगता है ओ ये भी जोड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास, ये भी था. तो थेरेपी भी इसी तरह ही है कि इनिशियली जब आप उस वूंड को खोल रहे होते हैं, जैसे अरीज ने इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है कि आप उसको साफ करते हैं तो पहले आपको दर्द होता है. तो जब आप खोलना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपके, जिसको हम ईगो डिफेंसेस कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो उनको जब हम छेड़छाड़ी कर रहे होते हैं उनके साथ, तो बहुत अंदर से ही रिटेलिएशन आ रही होती है और उसमें एंजाइटी कभी कभी बढ़ जाती है, जैसे आपने विटनेस किया. लेकिन थोड़े अरसे के बाद फिर वो ठीक होना शुरू हो जाता है. आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अरीज, कि इनिशियली आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी, लेकिन व्हाट केप्ट यू गोइंग फॉर थेरेपी? मेरा ख्याल है डीप डाउन आई न्यू के अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो जब तक निकलेगा नहीं वो हील नहीं होगा. A part of me was healing in that environment जो आपने एक safe space create की हुई थी. It was very therapeutic only to come and sit with you. क्योंकि अगर आपको याद हो तो there were some times जब हम सिर्फ बैठे होते थे. Exactly. और मैं चुप होती थी because I was so numb I couldn't even talk. लेकिन सिर्फ चुप करके उधर बैठना that was also very healing. क्योंकि वो जो एक थेरेपिस्ट की स्पेस होती है it's very accepting and nurturing. Exactly, absolutely. और एक पॉइंट आया था जब गोइंग टू थेरेपी बिकेम अ लिटिल एडिक्टिव, कि ये वो एक जगह है जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है. Absolutely. और कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं मिल रही वहाँ से. तो आई थिंक दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी टू कीप गोइंग. Thank you so much for putting it so beautifully, and you made my work easy. So this brings us to the point where I wanted people to know that how can you select a therapist. So in that case, just like Areej told, that it was a safe environment for her where she could, even if she wanted to be quiet, I was always sitting there with her. And a good therapist will always just support you and be there with you as a strong pillar and a strong support, creating that relationship and that perfect environment for you where you feel non-judged and you are able to finally explore within and open up. So that is exactly what happened with Areej. And when you want to go for therapy, there are 2 things so far that I have concluded with you. That first, be patient.
You have to have faith in the healing journey, and you have to decide that no matter what, I want to heal. And that is, I think, what was the major factor in you. And secondly, when you are choosing a therapist, you need to see that, am I feeling comfortable with this person? Because it's not that a therapist is not good, or it's not about the therapist's ability of being good or bad. It's about you resonating with your therapist, and is the therapist able to provide you with that holding and that relationship? That is what creates all the difference. What do you say about it, Reej? मुझे जो एक बात बहुत comforting हमेशा feel होती थी वो ये थी कि whenever I presented a problem or an issue to you, you never gave me any advice कि अच्छा ये कर लो, वो कर लो. You know, I was never told what to do. I was always, given a suggestion or an idea, or I was, encouraged to probe deeper inside myself कि मैं खुद क्या चाहती हूँ. तो वो जो एक थी ना कि मेरी आवाज़ important है, मेरा opinion matter करता है for you as well. तो वो एक बड़ा motivating factor था for me. Okay, great. Thank you so much, Reej. And right now we are going on a short break. And after the break, we will still continue our conversation with Reej and also giving you more therapeutic suggestions and advices. So stay tuned. खोल कर आंख मेरे आईने गुफ्तार में आने वाले दौर की एक धुंधली तस्वीर देख. सितारों की चाल या चाल का मुस्तकबिल, और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आज का कल, सिर्फ साउथ एशिया ग्लोबल टीवी पर.
after the break, and I'm sure that you guys are enjoying as much as I am enjoying with Areej. So let's just immediately go into it again and ask Areej something more about her therapeutic journey. तो अरीज, अब आप मुझे ये बताएं कि थेरेपी में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से आपको लगा कि आप ठीक होना शुरू हो गए हैं या चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई? जो एक सिग्निफिकेंट मोमेंट आया था वो ये था कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड माई बॉडी. मेरे में बॉडी अवेयरनेस आई थी. मुझे एंजाइटी का हम हमेशा से सोचने के दिमाग में होती है, लेकिन वो मेरी बॉडी में ट्रैप्ड थी. मेरे शोल्डर्स क्लेंच्ड हैं, मेरे जॉस क्लेंच्ड हैं, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मैंने अपनी बॉडी को किस तरह से ओपन अप करना है कि मेरी एंजाइटी जो है वो रिलीज़ हो, ना कि मैं मज़ीद उसको अंदर ट्रैप करती जाऊँ. और आई ऑलवेज इमेजिन्ड माई सेल्फ बीइंग डिस्टेंट फ्रॉम माई बॉडी. मुझे याद है जब आप ब्रेथ वर्क करवाया करती थी तो आप मुझे कहती थी इमेजिन योर बॉडी, तो मैं एक जगह खड़ी होती थी और मुझे अपनी बॉडी बड़ी दूर नजर आया करती थी, दैट आई वाज डिस्टेंट फ्रॉम माई बॉडी. तो वो एक पॉइंट था व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल उसको बैक पे के रखा हुआ, उसको भूली हुई हूँ. इट्स समथिंग दैट आई नीड टू लव एंड ट्रेजर फॉर माई सेल्फ. तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब मेरे अंदर एक बेहतरी आ रही है. आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, आई एम एक्सेप्टिंग माई बॉडी, आई एम लविंग माई सेल्फ. सो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एड अ लिटिल कि इनिशियली यू रिमेंबर कि जब आप आई थी तो आप इतनी नम होती थी कि अब मतलब अरीज बिल्कुल हिल नहीं पाती थी. उसकी बॉडी बिल्कुल, इट वाज जस्ट लाइक अ स्टोन जिसको रख दिया हो सोफे पे. एंड बिकॉज आई डू बॉडी साइकोथेरेपी, तो अरीज के साथ ये होता था कि आई वुड एब्जॉर्ब दैट सो मच विद इन माई ओन सेल्फ कि मैं भी पैरालाइज हो जाती थी बाय द एंड ऑफ द सेशन और मुझसे भी उठा नहीं जाता था आफ्टर अ व्हाइल. तो उसके इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम. और जैसे आपने कहा कि बॉडी अवेयरनेस आई जिससे आप थोड़ी सी चीजें चेंज होने लगी, बिकॉज अरीज वाज ओनली एक्चुअली टेक्निकली ऑपरेटिंग फ्रॉम हर माइंड. सिर्फ कॉग्निशन काम कर रही थी. और असल में इट्स एन 80-20 रूल कि 20% ऑफ योर साइकोलॉजी एंड 80% ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड वाइस वर्सा. सो जब आप अपने ट्रॉमा को ट्रैक कर लेते हैं या फियर को इग्नोर करते रहते हैं या इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है. एक बहुत ही फेमस बुक है द बॉडी कीप्स द स्कोर, जिसके अंदर वो इतनी खूबसूरती से ही एक्सप्लेन्स दैट हाउ द बॉडी कीप्स एब्जॉर्बिंग ऑल द फियर्स एंड ट्रॉमास इन इटसेल्फ. Which also brings me to the point to explain it to people कि जब आपको लगे कि आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस खत्म हो गई, आपको अपनी बॉडी ज़्यादातर सुन फील होती है, आप बैठे बैठे जोन आउट कर जाते हैं, आपको समझ नहीं आती बात करने की, आपकी मेमोरी अफेक्ट हो रही है, आपको लोगों पर ट्रस्ट नहीं रहता, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं ऑफ PTSD, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ट्रॉमा. तो इस केस में साइकोथेरेपी इसलिए काम करती है क्योंकि साइकोथेरेपी में हम कॉग्निटिवली डील नहीं करते हैं. साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो सिर्फ आपको कॉग्निटिवली आपके माइंड के साथ आपको बता रहे होते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना. अब कोई आपसे पूछे कि बिल्कुल जैसे आपने शुरू में कहा कि आपको जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा था तो सबको कहते थे ऐसे नहीं सोचो, आपके कहने से वर यू एबल टू नॉट थिंक लाइक दैट? ये बेसिक रूल्स तो सबको पता होता है. हाँ? ये बात तो मुझे भी पता थी कि मैंने डिप्रेशन में नहीं जाना, मैंने एंजाइटी नहीं फील करनी. लेकिन बट आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरे पास कोई स्विच नहीं है जिसको मैं ऑफ करूं तो मेरी एंजाइटी ऑफ हो जाए और अब मैं ऑन कर लूं उसको तो मैं बाहर निकाल लूं. एग्जैक्टली. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉलो दैट. Absolutely. So that is the distinction between psychology and psychotherapy कि psychotherapy में हम feelings और body awareness के through change लेके आते हैं. और you are a classic example of it कि अगर और body के साथ body के अंदर awareness लाने का मतलब ये है कि हम body में safety create करते हैं और different तरह की techniques होती हैं. So quickly अगर आप हमें कुछ techniques बता दें कि आपने ऐसा क्या use किया या आपकी therapist ने आपके साथ ऐसा क्या magic किया कि जिन techniques का use करके आज माशाल्लाह अरीज हमारे सामने इतनी कॉन्फिडेंट बैठी हुई है. टेक्निक्स काफ़ी डिफरेंट तरह की यूज़ होती थी, लेकिन जो दो जिनके साथ मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मिला था उसमें एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हुआ करती थी डिफरेंट वेरिएशंस की, डिफरेंट टाइम लाइन्स की, और सेकेंडली जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस हुआ करती थी. तो उससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस मिला और एक सेफ्टी की फीलिंग आया करती थी दैट आई एम सेफ और मुझे कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बेसिकली.
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज मैं सबको यही कहती हूँ कि एज यू नो दैट आई एम ट्रेन्ड एज अ ट्रॉमा थेरेपिस्ट, और ये मेरी स्पेशलिटी है बॉडी साइकोथेरेपी के साथ। तो हम साइकोथेरेपी में हमेशा एक इंटीग्रेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके उसके अंदर ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनामिक और बहुत सारी और वेरियस थियरीज हैं। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि थोड़े से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो कि सिर्फ बातचीत नहीं होती है, उसके पीछे देयर इज अ होल सिस्टम ऑफ थियरीज दैट वी थेरेपिस्ट इज अप्लाइंग, एंड थ्रू दैट वो आपके अंदर चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। जैसे अरीश ने हमारे साथ शेयर किया कि बॉडी के अंदर ग्राउंडिंग जब होती थी तो वो सेफ्टी फील करती थी। सो आप में से जो कोई भी है जो ओवरवेल्म फील कर रहा हो, या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हो, या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं क्या, तो अपने ओन पे वो क्या कर सकता है, अपनी अवेयरनेस, अपनी तवज्जो अपनी बॉडी में लेके आए, स्टार्ट ग्राउंडिंग योरसेल्फ। और इतना सिंपल तरीका है, आप हमारे प्रोग्राम्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हमने आपको बताई, आगे भी बताते रहेंगे। सिंपल अपने पाँव ज़मीन पर रखें और अपने बॉडी के अंदर तवज्जो लेके आए, अपने गहरे सांस लें, इसी से ही काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आई एम श्योर कि आज के प्रोग्राम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच अरीज फॉर कमिंग इन और अपना इतना खूबसूरत जर्नी शेयर करने के लिए हमारे साथ। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आई एम श्योर कि आप सब लोगों को भी अरीज की जर्नी सुन के और उसके थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंसेस से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ थेरेपी, व्हेन इज़ द टाइम टू सीक थेरेपी, एंड डोंट हेजिटेट टू गो एंड आस्क हेल्प, सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट। एक थेरेपिस्ट काम नहीं करता, दूसरे के पास जाएं, दूसरा काम नहीं करता, तीसरे के पास जाएं। इवेंचुअली यू विल बी एबल टू गेट द राइट हेल्प, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, द नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अपना बहुत ख्याल रखें। Well, I'm going to see you very soon in another episode of Soul Solutions. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। एक तरफ आप शैतान से मदद ले रहे होते हैं, एक तरफ अल्लाह से आप मदद ले रहे होते हैं। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गजा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई। झूठ को कर्ब करने का, झूठ को दबाने का कानून है। आज एक पार्टी की हुकूमत है और 5 साल भी पूरे नहीं होते कि वो रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल समझ रहे। ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया। खुदा ना खास्ता मसला हो गया, कोई लोगों से अफसोस करना है, चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। अगर कड़वे घूंट ना लिए होते तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वाकई में आप कोलैप्स कर चुके थे। जब तक जहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, पूरे मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते। अब नौजवानों की इमेजिनेशन बेहतर हो गई है, तो इसी गुरूर में वो उन्होंने कुछ कहा था कि हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे आपको, लेकिन वो गुरूर तोड़ लिया हमने। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. BISP सेंटर गुरुचक में करप्शन और माली बेजाब्तगियां अरूज पर। जराये के मुताबिक BISP सेंटर में रात गए टोकन और ID कार्ड्स का गैर कानूनी असूल जारी है। रिटेलर्स रात गए मखसूस खवातीन के घरों में जाकर इनसे टोकन और ID कार्ड्स ले लेते हैं। सुबह के वक्त फकत यही कार्ड स्कैन करके इनको पेमेंट की जाती है, जिनसे मनपसंद रेट के मुताबिक 500 से 2000 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, जबकि बाकी खवातीन खाली हाथ रह जाती हैं। खवातीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 15 दिनों से BISP सेंटर पर रोजाना आती हैं, लेकिन इन्हें हर बार ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि इनके कागजात मुकम्मल नहीं हैं या इनके टोकन की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि सिफारशी और मनपसंद टोकन वाली खवातीन को पेमेंट कर दी जाती है। ज़ईफुल उम्र खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्ची है कि हर रोज आने सानू वापस भेज दिता किराया ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 2-2000 3-3000 ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦਨ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਣੀ ਪੈਨ ਪਿਛਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੌਂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾफ ਕੀਤਾ। जैसा कि खवातीन का कहना था कि हम यहाँ BISP प्रोग्राम के एवज मिलने वाले अपने पैसे वसूल करने के लिए आती हैं, लेकिन हमें रोजाना जलील किया जाता है, हमारे साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ना पानी का कोई मुनासिब इंतजाम है और ना ही कोई मुनज़्ज़म तरीकाकार है। जबकि BISP सेंटर के असिस्टेंट अफसर रांझा के मुताबिक हम अगर शिकायत पर रिटेलर्स की डिवाइस ब्लॉक करवाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाइस दोबारा एक्टिवेट करवा लेते हैं। और इतने बड़े सेंटर्स पर हमें सिक्योरिटी के भी काफी इश्यूज हैं और इतनी तादाद में आई खवातीन के लिए सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद है, जो कि नाकाफी है। जी एक कंप्लेन आई सी कि एक बीबी थंब लगवा रही है और पैसे कह रही कि मैं घर जाके देवांगी। वो अगर घर जाके देंदी तो ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਸਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਿਟੇਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।
जामिया की तरफ से हमें इधर जो नफरी है कम से कम कोई 10-15 जो है पुलिस वाले एहलकार जो है उनकी ज़रूरत होती है। वो इधर सिर्फ एक कांस्टेबल है और 2 लेडी कांस्टेबल होती हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा इधर पानी का भी जो है कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारी तरफ से ये होता है कि हमने इनको टोकन इशू करना होता है और टोकन के ऊपर लिखना होता है कि इस बीबी की अमाउंट कितनी है ताकि वो पूरी अमाउंट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन हम उनको टोकन बना के दे देते हैं। 5 यहाँ पे रिटेलर आते हैं पैसे देने के लिए। उनका कभी कोई नेट का इशू होता है, कभी किसी का फिंगर का कोई इशू होता है। जो भी इश्यूज़ हैं वो इन रिटेलर हजरात की तरफ से हैं और ऐसी बीबियाँ भी हैं जिनके पास 10-10, 15-15 दिन के टोकन मौजूद हैं और उनको अभी तक जो है पेमेंट नहीं हुई। DISP सेंटर गुरुचक, जहां खवातीन अपने रोज़मर्रा के कामों को पसे पुश डालकर सिर्फ ये उम्मीद लेकर आती हैं कि आज इनको भी हुकूमत की जानब से मिलने वाली इमदाद मिल सकेगी और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेगी, लेकिन कोई भी मुनज़्ज़म तरीक़ाकार ना होने की वजह से वो शाम को फिर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। प्रोग्राम दी करंट अफेयर के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें, ठीक है। ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की।
Fahrradfahren. हमारी पूरी कौम को इस वक्त डंडे मार के बलोचिस्तान भेजा जाए। बहुत बढ़िया। तरबियत में कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है। ये जो फॉरेन वाला काम ठीक नहीं होता। Ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux, c'est... I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Hello, welcome to Yesterday, Today and Tomorrow here on South Asia Global Television with me, Robin Ashby. प्रोग्राम है जमत अफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। Hello and welcome to Business ABC. कि जी क्या हमें कोई इकोनॉमिक सेलिब्रेशन मुआशी निजात भी मिलेगी कि नहीं? देखिए जो सियासत है ना वो ख्वाबों की तजारत है। जो एंकर जितना चीखती है वो उतना फेमस हो जाती है। चीखने चिल्लाने की जहाँ तक बात है, आई थिंक आई डोंट फाइंड इट गुड। Hello. Successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. कोई ऐसा बैट्समैन जिसको बॉलिंग करते हुए आप घबराते हो? पता है आप लोगों का जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर आजम है। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. तो यहाँ तंदूर भी लग चुका है और यहाँ पे रोटियाँ लग रही हैं ताज़ी ताज़ी। तो चावलों की रोटी आ चुकी है हमारे पास। मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ढाबों की रिवायात।
गर्मी का मौसम हो और ठंडा तरबूज ना हो, ऐसा तो सोचना भी मुहाल है। गर्मियों के लाजवाब फलों में से एक सुर्ख रंगत का ये फल छोटे बच्चों, मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों को भी बेहद पसंद है। तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो कि पानी की कमी और डिहाइड्रेशन से बचाता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। इसमें विटामिन ए, सी और B6 भी मौजूद है, जो कुव्वत मुदाफत को मजबूत बनाता है। तरबूज दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें लाइकोपीन होता है, जो दिल की बीमारियों से बचाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। ये इंतहाई कम कैलोरीज की वजह से वजन कम करने में भी बहुत मुफीद है। ये निज़ाम नहज़ाम को बेहतर बनाता है। ये ना सिर्फ आपको रिफ्रेश करेगा बल्कि सेहतमंद भी रखेगा। तरबूज का जूस कुदरती हाइड्रेशन का बेहतरीन जरिया है। अगर यूं कहा जाए कि तरबूज का हर एक बाइट आपकी सेहत को बेहतर बनाता है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। भी बिल्कुल बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी का तोड़ वाज तरबूज ही है ते सेहत वास्ते बड़ा अच्छा होंदा है ते हर खास व आम वास्ते बंदा लै भी सकता है, हर बंदे की पहुँच तक है। तो सानू चाहिए कि गर्मी के विच जरूर ट्राई करना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ हैगी है। गर्मियों का लाजवाब तोहफा तरबूज न सिर्फ जायके और मिठास में अपना मुकाम रखता है बल्कि इंतहाई सस्ता होने की वजह से हर खास व आम की पहुँच में भी है। ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। वुमेन्स आर के साथ मैं हूं अर्सला ताहिर। कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios.
I could do that. That was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. I'm Rahila Ahmed. I'm a psychotherapist, a personality coach. We have decided to bring all of those tools and techniques that are scientifically proven. मामा मुझे बहुत ज़्यादा stress हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा tension हो रही है. What are we going to talk about today? Now we have two different parts of our mind. One is the conscious mind and one is the subconscious mind. Moment to moment miracles are going to come in your life, and moment to moment healing and happiness is going to come to your life. And as I mentioned earlier, today we are going to talk about your health. Hello and welcome to Business ABC with Ammar Mirza. I'm your host and delighted to be here again with you for the second in our series of shows talking about business and how you can be successful in business. And this particular show, I'm going to talk about ideas. So how do you get an idea? How do you validate an idea? And how do you take that idea forward when you want to start a business? And it's interesting because all day long we come up with lots of ideas, right? All of us come up with, okay, I'm going to be a millionaire, I'm going to be a billionaire. And you watch programs and you think about other people who have made lots of money. What you don't see is the pain and the suffering and the concerns. What all of us seem to be interested in is just getting to the end point, that shortcut. But actually, what's really important is about validating your idea and developing a plan. So, what am I going to talk through? I'm going to talk through the topic today, how you generate ideas, and how not every idea is a great idea, but equally how you take that idea and develop a clear roadmap to success. And I'm happy to admit that not all of my ideas have been great ideas, but one thing about ideas and personal ideas is whenever you come up with an idea, what happens? You say, oh, this is the best thing. So I want to talk to you about what happens when you've got an idea. And then you go and talk to your friends, your family, people that you know with this idea. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea. Oh, vadya. Yes. They'll never ever tell you that it's a bad idea because you're a friend, because you're a family. So what happens? Well,
you can then start spending time, you start investing in your idea. And the problem with this, and it's really negative, and I see this all of the time, is that people start going, this is the best thing since sliced bread or sliced roti or whatever it is. People think to themselves, hamara idea hai, kitna vadiya idea hai. Right, let me now put all of my time, I'm going to give my job up. I'm going to stop doing everything. I'm going to neglect my family. I'm going to do all of these things. And my idea is the best idea. Anyway, the point about this is quite simply, right? What you need to do is you need to think and plan out your idea. So, is there a need for whatever your product or service? And we're going to come on to this very shortly. But what I want to share with you is this. Equally, the negative side of not taking your idea forward is the missed opportunity. Right? How many times do we say, hey, tomorrow I'm going to get fit, or tomorrow I'm going to do this, or tomorrow I'm going to try that? And let me tell you, 97% of the world's population lives in Tomorrowland. Kalnu, Kalnu, Kalnu. And it's only the top 3% that take tomorrow and make it today. So the first thing is, if you have an idea, right, write it down. Don't keep it there. Most important thing is once it's written, you can see it. Once you write something, this action in itself transforms what you do with things. So I'm going to come back and share with you the top tips to taking your idea and developing them into an action plan. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash.
आपकी होस्ट वजिया खालिद। वेलकम टू द शो स्ट्रीट बाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौरी बेहतर से बेहतरीन खाने की तलाश में हर वक्त रहते हैं। बारबेक्यू है, कढ़ाई है, टिक्की है, कबाब है, टकाटक है, दाल है, सब्जी है, कुरमा है, सब्जी है, मछली है, तवा पीस है। दुनिया में क्या लेने आए हैं, खाने ही आए हैं। मैंने कहा बीवियों का भी तो हक बनता है ना, ये नहीं कि क्योंकि खाली किचन में ही वो काम करे ना, तो उनको भी तो एंजॉय करवाना चाहिए ना इनको। Okay, so what I want to do now is take you through the step-by-steps of how do you take your idea, validate it, and develop a successful plan. And what I want to do is advise you in such a way that you become investor ready, right? What does that mean? Well, I'm interested in your ideas. I'm interested in helping you validate your business plan and potentially invest. And where I'm not going to invest, open the door to the vast variety of investors we have access to. So, what are the tips and steps? So, just one final point around ideas, right? Is and tomorrow and leaving things, right? Guess how many times somebody wants to do something and does it. How many times do you think that is? Well, let me tell you, it is less than one, right? What does that mean? Well, the amount of times we say we're going to try and do something, or we've got an idea and it doesn't lead anywhere, and is more times than the times that it does. And the people with the ideas who persevere. So the first point is persevere, right? This is critical. So for example, you may or may not have heard of James Dyson, right? He's an inventor. He invented the Dyson. And how many times do you think he tried until he came up with that finished product? Let me tell you, it wasn't once, wasn't twice, wasn't 3 times. It was 5,427 times. 5,427 times that he failed, that he learned, right? Now imagine, for the vast majority of us, unless we get something now, it's instant gratification. Our young generation, they're watching, they're in the on-demand economy, right here, right now. You know, if the internet isn't quick, if the web page doesn't open very quickly, what do? Leave it. We have no perseverance. We have no patience, right? So let's take your idea. I've got this idea. What am I going to do with it? Well, the first things first is, as I've said, write it down. Secondly, test it. Right? How do you test an idea? Well, there's 3 components to a successful business that an investor, including me, want to understand. The first is desirability. Is my product or service, is somebody going to buy it? Does somebody need it? Does somebody want it? Right? So that's step number 1, desirability. And what we're going to do through each of these episodes is take you through a step-by-step plan, give you the shortcuts that can stop you from wasting money, time, and accelerate how quickly you can succeed.
But don't forget, the most critical part of anything is having a plan, because 1 minute in planning saves 10 minutes in doing. So the better you plan, the better the outcome. So desirability, right? Okay, so I've made something and I now need to see if other people want it. Lots of ideas, they come from two things, right? Is there a pain? Does someone suffer something? So if you think about Amazon, what did they do? They made things convenient. They give you something the next day or in a couple of days' time. Because up until that point, you had to wait. You had to wait a long time. You had to ship it. Someone had to post it. You had to rely on those things. So pain, overcoming pain. The second part is the gain. What is the gain? Well, Amazon, let's use that example again. Amazon delivers something to you very quickly. So if I need something today, I can get it tomorrow, and I can also send it to other people who might need it tomorrow as well. So that instant gratification. What is Amazon's business model? What is their success? It's all about convenience. It's all about helping you now is the thing. So desirability. Second thing is feasibility, right? So I might want to build a rocket to take me to the moon, right? I might want to sell you trips to the moon. Will people buy trips to the moon? I would love to go to the moon. I bet you lots of people would love to go to the moon. But can I build a rocket? Can I send it to the moon? No. So it's not feasible, right? That's the point. So desirable, feasible. Third point, and the most critical point where business, and this is really, really important, and this is where some people don't consider. The most successful businesses, they have to be viable, or you're going to make money, right? Because what's pointless is me buying something for 10 rupees or 100 rupees or 10 pounds or 100 pounds and selling it for 5 or 50. It's not a viable business. So you need to consider these things. So the top tips to convert your idea into a successful business and a business plan is desirable, feasible, viable. आपका पासपोर्ट ही आपका जैकपॉट है, ऐसा जैकपॉट जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में सेटल करवा सकता है। हम आपको गाइड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से। और इसके लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम सेटल अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन साउथ एशिया ग्लोब।
fantastic catch. This is a fantastic catch. पुलिस के मुताबिक शहर में तकरीबन मनशियात का खात्मा कर दिया गया। तो पुलिस ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है अगेंस्ट स्मगल्ड आइटम्स, जिसमें ये वो आइटम्स भी शामिल है जो ये गुटखा मावा मैनपुरियों में यूज़ होते हैं। So, what I want to talk to you about now is my personal journey and how I've developed ideas and how they've influenced me, so I can share this with you. So, I grew up here in Newcastle upon Tyne, and at the time went to a public school, so it wasn't a private school. You know, we had very limited money, and mum worked incredibly hard and to simply feed us, right? There were times, I remember when I was 9 years old, right? I remember sitting thinking, I'm only getting one roti, right? And there wasn't enough food on the table. And I was sat there thinking, oh my gosh, I don't want to be poor. So I had an idea, I had a plan, I had a vision. I wanted to be a millionaire by the time I was 30. And this is me, 9, 10. I started working when I was 10. On a weekend, during the week, went to school. On a weekend, worked in a shop, got £5, went and give it to mum. And every single week I done that. Why did I do that? Because it was really, really important to support the family. What did that do? Well, it influenced me, right? I could have done two things. I could have said, had a big chip on my shoulder, the world is against me, everything is against me. And don't forget, I also looked different. Everybody that I was with, everyone that went to my school, they were all white. I was Asian. So it makes it very hard. And you've got culture, religion. So it's dead easy to look at things and think that actually they are negative. And you can do one of two things with negative, right? When you fall down, you can lie there and think, I mar gaya. That's it. Or you can get back up and go, main dar gaya nahi. I'm marching on. And that's what I done. So, going to school, I studied. It was hard. It was very challenging.
but I focused. And some of the things that I wanted to do, I wanted to fit in. It was important to me that I was one of the gang and whatever else. And I thought to myself, why? Why am I doing this? I actually want to work hard and I want to be focused. And with any idea, I had a plan. So I started when I was 10, right? It sounds extraordinary, but you have to start early on with your plan. 1 year goes like this. 5 years before you know it. 10, 15, 20 years. The most successful people, the most successful businesses in the world, what are they? They have big goals. They have things that feel as if they're unachievable. So taking your idea, right, converting it into a plan. I didn't want to be poor, but equally, I wanted to achieve. So working hard. So there's 3 things, right, that I want to end this particular episode with. Desire, right? You need to have a desire. You need to have a passion. You need to decide where you want to be. You then need direction. And I've mentioned this so many times. You need to have a plan. Okay, I want to be a millionaire. All right. So, fine. Everybody can say that. How am I going to do that? How am I going to do it? Not taking shortcuts, not getting involved in scams or cutting corners, vagera, none of this, right? Because easy come, easy go is what they say. So you have to have a desire, you have to have direction, but the most important thing is determination, right? Determination. You have to keep going. So I was getting up early, working till late. It was hard. Maybe I didn't spend time with my friends all of the time, but I studied and I worked hard and I got to where I got to today simply through hard work and determination. But I had a passion and I had a plan. That's the most important thing. खोल कर आंख मेरे आईने गुफ्तार में आने वाले दौर की एक धुंधली तस्वीर देख, सितारों की चाल या चाल का मुस्तकबिल, और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आज का कल सिर्फ साउथ एशिया ग्लोबल टीवी पर।
आम एक ऐसा फल है जो न सिर्फ अपने जायके और मिठास की वजह से मशहूर है बल्कि अपनी तारीख, सकाफत और फवायद की वजह से भी एक खास मुकाम रखता है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आम की तारीख कदीम जमाने तक फैली हुई है। कहा जाता है कि आम की काश्त तकरीबन 4000 साल कबल हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सकाफतों में गहराई से जुड़ा हुआ है। आम को मुख्तलिफ त्योहारों और तकारीब में भी खास अहमियत दी जाती है। कदीम जमाने के बादशाहों और शहनशाहों के दरबार में आम की पजीराई और इस्तेमाल एक आम बात थी। आम की बेशुमार इकसाम है जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद मिठास, खुशबू और जायका होता है। अनवर एटोल, सिंदड़ी, चौंसा, लंगड़ा और दुसहरी चंद मशहूर इकसाम में से हैं। आम न सिर्फ मजेदार होता है बल्कि ये गजाइत से भरपूर भी होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और दीगर गजाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। आम निज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाता है, जिल्द को निखारता है और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। में फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बहुत कसीर तादाद में होते हैं, आज के जो गर्मी के मौसम में निज़ाम को बेहतर करने के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका जो है आपके जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है। ये आम जो है गर्मियों का फल है, फलों का बादशाह है। बहुत ज़बरदस्त आम है। आमों का मौसम आया हुआ है, गर्मियों का मौसम है। बहुत मीठे मीठे आम आए हुए हैं। जो मौसमी फल है ये लाजमी खाया करें, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। आम का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। इसे बराह रास्त खाने के अलावा आम का रस, आम की चाट, आम का मुरब्बा और मुख्तलिफ मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। आम की लस्सी और शेक भी बहुत मकबूल हैं। आम की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आम का मौसम आता है तो लोग बेचैनी से इसका इंतज़ार करते हैं। बाज़ारों में आम की खरीदारी अरूज पर होती है और हर घर में आम की महफिलें सजती हैं। बादशाह कहना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये ना सिर्फ जायके और ग़िज़ाइयत में लाजवाब है बल्कि इसकी तारीख़ी, मुआशरती और अदबी जो तारीख़ है वो इसको बाकी फलों से मुमताज़ करती है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। एक तरफ आप शैतान से मदद ले रहे होते हैं, एक तरफ अल्लाह से आप मदद ले रहे होते हैं। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
दौरान भी करंट अफेयर्स के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एक सरेदस्त जो मसला दरपेश आया वो तो गंदम का स्कैंडल है। 22 अक्टूबर 2023 को कमेटी जो है कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दी जाती है कि जी हम गंदम उगाएं। आप जो कोई भी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से, मुल्क के अंदर ना आप टैक्स लगा सकते हैं, ना आपके पास टैक्स कलेक्शन है। ये है कि यहाँ तो अपनी आप जातियात की सियासत कर दें। ठीक है, ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के फुटप्रिंट्स मौजूद है। हमारी जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग की, उसमें कैपेसिटी भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। Blow gently, O easterly, for Anarkali rests here, with dreams of Salim in her eyes. Anarkali rests here. This is the tomb of those martyred for love. Blow with respect while you are here, O breeze. May you forget, I still remember her story. I still remember the moment when she attracted his eye. Her beauty stood against the Taj. Their love stood up to the regime. Great Mughal emperors. Who haven't heard about them? Their empire included territories of almost half of the world. King Akbar got his hand on the reins of empire in 1500s. Under the rule of Akbar the Great, the empire grew considerably and consolidated its power. It was then considered to be one of the greatest empires of the world at that time. In 1526, the Mughals started proper government rule in the region of the subcontinent. Before that, there were 5 ruling dynasties, including the Slaves, the Khiljis, the Tughlaq, the Sadat, and Lodhis. The Mughals took over rule from the Lodhis. Babur is considered the founder of this dynasty, and he ruled in this region for quite some time. The Mughal era is usually divided into 2 phases. The first phase is that of the great Mughals, which is spread from Babur to the death of Aurangzeb. From Aurangzeb's death in 1707 to the War of Independence in 1857, the phase is called the latter Mughal or the declining Mughals. This way, the rule is divided into 2 distinct parts. The foundation of the empire had long gotten strong until Akbar's era. From Babur, Humayun to Sher Shah Suri's period, Hindustan had been united. Small places were united with Hindustan. The borders of the state in Akbar's rule were spread all across Hindustan. One main reason for this was Akbar's liberal attitude towards religion. He was married into different religions and different communities. He gave everyone a designation in court without any discrimination. This resulted in increased love for him by the masses and helped him become a great emperor. After King Akbar's death, Prince Salim ascended to the throne with the title of Jahangir. He continued to follow his father's tradition, fighting battles and expanding the empire. Empire was prospering under his rule, even though he was a great warrior, but by heart a very romantic person. When we probe Mughal history, we get to know that there was no rule of succession. There was not one rule of choosing an heir, and it was always decided by power. Jahangir was lucky that he was the only child of his father. Although we understand Jahangir didn't have great abilities as an administrator, he was a good painter and architect. He had qualities connected with literature, and he also got a very established government. Akbar ruled for 50 years, and his government developed institutions that were very strong and ran well. So it was Jahangir's good luck
that he had to carry it on, and even not being such a good administrator, he was able to rule very well for 27 years. Prince Salim's passionate love was an ordinary courtesan, Anarkali. Anarkali came to the subcontinent with a caravan and made her way to Akbar's court because of her beauty. She was Akbar's courtesans, or as we call in Persian, Kanis. On account of her beauty, she was given the name Anarkali, which means pomegranate blossom. Anarkali was like any other fictional character in our history, according to my research. Those were the days when we needed stories, since there was no other source of entertainment. The only source of entertainment was the harem, and other than storytelling. We know Anarkali as a character. We do not know where she came from or what her origin was. No one knows that yet. From the time the rule of Akbar until 200 years later, Anarkali is not mentioned anywhere. Not in any book, not in any historical source. William Finch mentioned Anarkali in a travelogue he wrote when he came to the subcontinent, and his source for the story was hearsay from people. During a dance performance in the Sheesh Mahal, Prince Salim was attracted to the gorgeous courtesan Anarkali, and they fell in love. The love was getting famous as they were seen together all the time. In traditional stories, it is said that at some point when Anarkali was serving in the court, she looked at Prince Salim smilingly. Prince Salim instantly liked her. She used to dance along with other courtesans, but Prince Salim liked her specifically. And during this time, there was no other courtesan, Dil Ara, which referred to in Imtiaz Ali's Taj's drama. She was a famous dancer and was a beloved of King and Salim. She was jealous that the Prince Salim's eyes caught Anarkali when she wanted to be his beloved courtesan. People started to poison King Akbar against Prince Salim and Anarkali. Prince Salim wanted to make Anarkali Queen of Hindustan, but King Akbar was against it, as she was an ordinary courtesan. They had several heated arguments. He was enraged. Eventually, King Akbar issued the order to execute Anarkali by encapsulating her in a concrete wall. As a historian, I believe this is fiction. It is a story. It is not related to reality in any way. The evidence behind my argument is that contemporary historians of that time never mentioned this. For example, this tragedy happened during Akbar's rule. Akbar's regime had very big historians, including Abul Fazl, who wrote Akbarnama. There were other historians, Mullah Abdul Qadir Badayuni and Nizamuddin. None of them ever mentioned any such incident about Anarkali. Mullah Abdul Qadir Badayuni was so blunt and bold that he wrote many of Akbar's drawbacks. And if any such thing might have happened, especially connected with a girl, a woman who was getting cemented alive in a wall, as mentioned in the story, he would have written about it. The thing is, Anarkali and Prince Salim first look at the atmosphere of the court and see the status of the prince. Love, infatuation, or any other courtesan would not mean anything to the prince. The harems were full and plenty of women. So such stories, there are distances between lover and the beloved. They had difficult meeting. The biggest swing in the story is why would there be love or devotion for one courtesan who is within the reach of a prince? Secondly, the story is not mentioned anywhere. Neither is it mentioned in Tuzk-e-Jahangiri, which is Jahangir's autobiography, nor does any historian at any time mention it. Although Salim and Anarkali are present in the history of the subcontinent, but people still believe it was a fictional story which started as rumors and has passed down generation to generation. While some historians go along with history
and evidence of the tomb of Anarkali. Some people think about Shehzada Salim and Anarkali that this is only a myth or an imaginary story about virtual characters. I deny that. My point of view is totally different from that. I believe they were real characters and they will be remembered across the whole of history, even in the coming times. These are real characters and nothing imaginary. It is probably not possible to say that Anarkali did not exist at all. There was no such character or person at all. Anarkali might have existed. William Finch, a tourist, mentioned this when he wrote his travelogue. But when he came to the subcontinent, Akbar's rule was over and this story was told by people. And there were many versions of it, including Anarkali being killed, being cemented alive in the wall, as well as Prince Salim being madly in love with Anarkali. But historically, there is no evidence to say that this story, written by Imtiaz Ali Taj, is a true story. Some love stories live on even forever, and some die out. But love remains till eternity, just as the love story of Anarkali and Prince Salim has been immortalized over the passage of time. They became symbols of love. Even today, when people fall in love, they are referred to as Anarkali and Prince Salim. Salim said, with all his love, to his beloved Anarkali, I shall bring the stars for you, if you so wish. I shall abdicate, if you so wish. What winds were they that blew them? Salim is no more, nor is Anarkali, but this tomb bears testimony to their love, of their labor of love. Waiting for the bee lies here the bud of pomegranate tree. Blow gently, blow easily. Not every memorial of love is a Taj Mahal. प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गजा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई। झूठ को कर्ब करने का, झूठ को दबाने का कानून है। आज एक पार्टी की हुकूमत है और 5 साल भी पूरे नहीं होते कि वो रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया। खुदा ना खास्ता मसला हो गया, कोई लोगों से अफसोस करना है, चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। अगर कड़वे घूंट ना लिए होते तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वाकई में आप कोलैप्स कर चुके थे। जब तक जहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, पूरे मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते। अब नौजवानों की इमेजिनेशन बेहतर हो गई है। तो इसी गुरूर में वो उन्होंने कुछ कहा था कि हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे आपको, लेकिन वो गुरूर तोड़ लिया हमने। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. तो यहाँ तंदूर भी लग चुका है और यहाँ पे रोटियाँ लग रही हैं साथ ही तो चावलों की रोटी आ चुकी है हमारे पास। मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ढाबों की रिवायात। This is a fantastic catch. आर के साथ मैं हूं अर्सला ताहिर। कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग।
Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। वेलकम टू द शो स्ट्रीट बाइट्स। स्ट्रीट बाइट्स की एक नई और मज़ेदार एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट बरकत मार्केट में, जहां स्टॉल्स मज़े मज़े के खानों से सजे हुए हैं। और जहां खाने का नाम है वहां लाहौरियों का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं इधर के खाने और साथ ही साथ लोगों से कहते हैं मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम दानियाल है। किसके साथ हैं आप? मैं तो इधर दोस्तों के साथ आया हूँ। माहौल कैसा लगा आपको इधर का? माहौल तो बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है इधर का। किसके साथ घूमना ज़्यादा पसंद है, फ्रेंड्स या फिर फैमिली? मैं तो फ्रेंड के साथ ज़्यादा घूमता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? असल बात ये कि फ्रेंड थोड़ा वफादार होते हैं ना। क्या खाने आए आप इधर? हमने तो इधर बस चिकन मिकन खा लिया। तो कैसा लगा आपको इधर का खाना? तो बहुत अच्छा है, इधर का लोग भी बहुत अच्छे है। लाहौर से या किसी दूसरे शहर से? मैं तो मर्दान से। उधर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है कि लाजमी ट्राई करनी चाहिए? उधर की तो ज़्यादातर मुझे चावल पसंद है, चावल का तो उधर की चावल भी बहुत अच्छा है। क्यों, ऐसा क्यों है? बस हर जगह का अपना एक चीज़ मशहूर होता है ना, उधर का चावल मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उधर का चावल। खाना खाने वालों में से ही बनाना भी आता है? मुझे चाय के अलावा कुछ भी नहीं आता है, वो भी परसों मैंने सीखा है। क्या मतलब, कुछ भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आता। तो चाय फिर क्यों सीख ली, ये तकल्लुफ क्यों किया? चाय भी मतलब वो घर में कहा गया था, वो लोग बता रहे थे कि ऐसे करो तो बस बना दिया। फिर दोबारा बना रहा था वक्त भी, फिर चीनी मैंने नहीं डाली थी दोबारा जब बना रहा था। फिर क्या, फिर बाद में डाल के पी ली? फिर दोस्त मेरे साथ इसने बोले इसको, मैंने बोला चाय कैसे, उसने बोला कि यार इसमें तो चीनी ही नहीं है। तो बस प्रेशर में इतना हो गया थोड़ा। अच्छा, फास्ट फूड या देसी क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे तो फास्ट फूड पसंद है। फास्ट फूड में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? बस ये बर्गर मर्गर ये चीज़ें खाते हम। ऐसा क्यों है? बस पसंद की बात होता है ना। अच्छा, कोई एक ऐसी डिश जिससे आप कभी इनकार नहीं कर सकते? डिश यार मुझे तो बस ज़्यादातर ये चिकन हो, चावल हो, ये फिश ये चीज़ें पसंद है, और तो मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं। ये रख दे तो इनकार नहीं करता। इनकार तो किसी भी चीज़ से नहीं होता। बस मैं इन चीज़ों से बिल्कुल इनकार नहीं करता, अगर मैं जितना भी कहो बस खाता हूँ। अच्छा, खाने के वाले से फ्रेंड्स के साथ कोई फनी मेमोरेबल स्टोरी? यार बनी तो एक है, लेकिन फ्रेंड के साथ किया था। बता दें। वो फ्रेंड सामने मतलब कड़ा है, नहीं बता सकता, नाराज़ ना हो जाए। लेकिन उसको इतना तो पता चल गया होना ना, तो अब बता दें। कुछ नहीं पता चल रहा है, उसने एक पाँव भी नीचे गया उधर इस साइड पे किया। तो मैसेज जॉब देना चाहिए। बस मैं तो मैसेज यही दे दूंगा कि इधर का खाना बहुत अच्छा है, सब आ जाए खा ले, लोग भी अच्छे हैं इधर का लाहौर। आज ज़रूर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली अहमद।
अली अहमद क्या बना रहे हैं? जी मैं ग्रिल बर्गर तैयार कर रहा हूँ। क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? इसमें चिकन पैटी होती है, ग्रिल के फिले होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर होते हैं। ये डीलर हमारी लगी हुई है। 1500 रुपये में 6 ग्रिल बर्गर हैं, 2 लोडेड फ्राइज़ हैं। 2000 रुपये में 5 बर्गर हैं, 1 लार्ज पिज़्ज़ा, 1 फ्राइज़ है। तो और क्या क्या बना लेते हैं? इसके अलावा हमारे पास सैंडविच होते हैं, बर्गर होते हैं, शेक्स वगैरह होते हैं, लोडेड फ्राइज़ होती हैं। तो लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी जगह? मैम ज़्यादातर लोग आवाम जो है ना वो ज़्यादातर डील ही पसंद कर रही है, क्योंकि हमारी डीलें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं और डील की वजह से हमारा रश है वो ज़्यादा काम चल रहा है। आप खुद क्या पसंद करते हैं? मुझे लाइक है सैंडविच। सैंडविच फास्ट फूड या फिर देसी? फास्ट फूड। क्यों फास्ट फूड क्यों पसंद है? मैं खाता ही फास्ट फूड हूँ। खाते ही फास्ट फूड है। वैसे घर का खाना पसंद है या फिर किसी पॉइंट का? घर का तो देसी होता है। तो फिर आपने देसी नहीं बोला, पहले आपने फास्ट फूड बोला। फास्ट फूड भी मुझे ज़्यादा यानी लाइक में ज़्यादा फास्ट फूड ही करता हूँ। घर में सिर्फ ज़्यादा नहीं खाता, मैं बाहर ही ज़्यादा खाता हूँ, इस वजह से मुझे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। घर में भी कुछ बनाते हैं या फिर नहीं? घर में मेरा दिल ही नहीं करता। क्यों दिल क्यों नहीं करता? कभी ये नहीं हुआ कि बीवी को आज आराम करवाऊँ और मैं खुद बनाऊँ? नहीं, मेरी बेगम माशाल्लाह बनाती है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता खाने को, क्योंकि दिल करता है सिर्फ बाहर ही खाऊँ दोस्तों के साथ, यानी इंजॉय हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इस वजह से मैं बाहर ही ज़्यादातर खाता हूँ। अगर आपकी बीवी ने देख लिया ना हम तो गए पक्का। बीवी मेरी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा नहीं करती, सारी करती लेकिन अब कर जाएगी। कोई एक ऐसी डिश जिससे आप कभी इनकार ना कर सकते हो? करेले। करेले किधर के? करेले अपने घर के। बीवी मेरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाती है। ये तो गुड हो गया। अच्छा फूड से रिलेटेड कोई फनी मोमेंट आप बताना चाहें? फनी मोमेंट क्या बताएं आपको, मतलब ज़्यादातर आवाम जब यहाँ पर आती है वो कहती है कि यानी ना बर्गर में चिकन नहीं होता, पैटी नहीं होती, मतलब इस तरह के ना बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो ये रियल आप बर्गर आपके सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कोई मतलब इसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं है, चिकन हम डाल के दे रहे हैं, लेकिन आवाम कमेंट करती है कि बर्गर में चिकन नहीं होता ये वगैरह। तो ये रियल आपके सामने आप देख सकते हैं, ये बर्गर आपके सामने रियल लगे हुए हैं, कोई मतलब इसमें हम धोखाबाजी नहीं कर रहे, हमारी डीलें लगी हुई हैं, ठीक है। आवाम मतलब ज़्यादातर कमेंट करती हैं, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ को मानता। मैं कहता हूँ कि कस्टमर यहाँ पर रियल आएँ, रियल देखें और रियल ही मतलब ना सब कुछ देख कर फिर खाएँ, फिर जो कहें फिर देखें। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम जुमैरा काशिफ। जुमैरा काशिफ, किसके साथ आई हैं आप? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। फैमिली के साथ आई हैं। माहौल कैसा लगा आपको इधर का? अच्छा एनवायरनमेंट है, वैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी। सुना था इनका बहुत सारा हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर इनका, तो हमने सोचा कि एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा आप वीडियो से इंस्पायर हो गए? हाँ जी, वीडियो से इंस्पायर होकर आई। घर में कुछ बना देती हैं, मतलब घर में का कुकिंग करती है कि नहीं करती? हाँ हाँ, मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, खाने में स्पेशलिटी है, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, और भी चीज़ें बना लेती हूँ। लेकिन कभी कभी फैमिली जैसे बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप कुछ बाहर से खाना चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, डिफरेंट टेस्ट देखने चाहिए, तो उसके हवाले से आज हमने कहा कि चलो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा 2 डिशेस को मिलाकर अगर एक डिश बनाए तो वो 2 डिशेस कौन सी होंगी, और जो नई डिश बनाएंगी उसको नाम क्या देंगी? चिकन को और राइस को अगर मिला के बनाएं तो बिरयानी बन जाएगी। नहीं आप कोई डिफरेंट कोई 2 डिशेस? 2 डिशेस आलू की भुजिया को मिला के साथ में पराठे में रोल करके पराठा रोल बना लूँगी। ये अच्छा है। लाहौर से हैं किसी दूसरे शहर से हैं? मैं लाहौर से। तो लाहौर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है कि सबको लाजमी ट्राई करनी चाहिए? लाहौर में स्पेशली बहुत सारी, अब तो बहुत फूड लवर्स हो गए हैं लोग, बहुत पसंद करते हैं बाहर खाना खाना, और नान चने जो सुबह नाश्ते में यहाँ लाहौरिये जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। हलवा पूड़ी हो गई, नान चने हो गए, बिरयानी लवर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, डिफरेंट टेस्ट के अकॉर्डिंगली लोग पसंद करते हैं। देसी या फिर फास्ट कुछ ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? डिपेंड्स करता है मूड के ऊपर कि आपका कैसा मूड है। कभी देसी खाने को दिल करता है तो आपको बारबेक्यू ले लेते हैं या कुछ ऐसा, और कभी कुछ चाइनीज़, कभी चिकन, कुछ इस तरह की चीज़ें। डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है आप क्या पसंद करते हैं। अच्छा कोई एक ऐसी डिश जिससे आप कभी इनकार ना कर सकती हूँ? बिरयानी। बिरयानी से आप कभी इनकार नहीं कर सकती? कभी इनकार नहीं कर सकती। मैं खुद बड़ी अच्छी बिरयानी बनाती हूँ और फॉर एवर मैं पसंद करूँगी कि मैं बिरयानी खाऊँ। अच्छा फूड से रिलेटेड कोई फ़नी एक्सपीरियंस? फूड से रिलेटेड अब तो भूलते जा रहे हैं ऐसे फ़नी एक्सपीरियंसेस, अब तो सीरियस लाइफ शुरू हो गई है। चलो कोई मैसेज दे दें। मैसेज ये है कि आजकल की बच्चियों को लाजमी घर में खाना पकाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाहर से खाना भी अच्छा है, लेकिन ज़रूरत ये है कि
आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत ट्रेंड हो गया है, बच्चे तो बच्चियाँ स्पेशली बाहर खाना पसंद करते हैं, घर के फूड्स को वो इतना पसंद नहीं करते, लाइक वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते। तो हेल्दी फूड खानी चाहिए, कभी कभी आप बाहर भी आ जाएं, बाहर भी एक्सपीरियंस करें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो घर के फूड को पकाना भी सीखना चाहिए, स्पेशली यूथ को, गर्ल्स को तो हमारी ख़ास तौर पे पकाना भी सीखना चाहिए और फिर खाना भी सीखना चाहिए, खाने का भी शौक रखना चाहिए, हेल्दी फूड भी खानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस। अवैस, आप मुझे बताएं क्या क्या है आपके पास? हमारे पास जी ग्रिल बर्गर्स हैं, ग्रिल सैंडविचेस हैं, बीफ बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, उसके बाद ग्रिल शवारमा है, बहुत सी आइटम्स हैं हमारे पास। तो आपने यही पॉइंट क्यों चूज़ किया? यार हमारा ये शुरू से कारोबार है, हम तकरीबन मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए हैं बरकत मार्केट के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से सेटअप है ये और शुरू से चल रहा है। अच्छा, इधर से स्टार्ट किया? जी जी, स्टार्ट भी इधर से किया। तो लोगों के क्या रिव्यूज़ होते हैं आपके खाने के बारे में? लोगों के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों को हमारा स्पेशली बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है, लोग हमारा बीफ बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हम एक स्पेसिफिकली एक मीट होता है काऊ मीट, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा मीट का वो यूज़ करते हैं बीफ के अंदर, और हमारे जो मसाले लगते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाउडी का शेफ़ था हमारे पास, वो हमारे पास अभी काम कर रहा है, और वो सारे जितनी भी रेसिपीज़ हैं सारी हाउडी से हम लेके आए हैं। तो क्या ख़ास मसाले इस्तेमाल होते हैं बताएं? भाई ये इसीलिए तो ख़ास हैं कि ये बता नहीं सकते। शेयर करने से मतलब पब्लिक को पता चलेगा ना? पब्लिक को पता तो लग जाएगा, लेकिन फिर पब्लिक हमारे कंपटीशन में खुल जाएगी ना दुकान, फिर हमारा तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा अगर हम बता देंगे। KFC, मैकडोनल्ड, हाउडी कभी भी अपने मसाले किसी को नहीं बताता। अगर अपना सीक्रेट बता देंगे तो ऐसा है कि आपने किसी के वो हाथ में अपनी कोई चीज़ दे दी है, फिर वो उसे इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल ऐसे। आपको खुद खाने में क्या पसंद है? मुझे बीफ बर्गर पसंद है, मैं बीफ के अलावा नहीं खाता, चिकन खाता ही नहीं हूँ, सिर्फ बीफ बर्गर खाता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? यार टेस्ट वाइज मुझे बीफ ज़्यादा पसंद है, चिकन आपको पता है घर में भी खाते हैं, कभी अम्मी सालन गोश्त बना लेती हैं तो वो मुर्गी खानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एज अ ऑनर मुझे जब भी भूख लगती है या मैं बीफ सैंडविच खाता हूँ या मैं बीफ बर्गर खाता हूँ, दोनों में से एक चीज़। तो घर का खाना ज़्यादा पसंद है या इधर का? घर का बहुत ज़्यादा पसंद है, घर का खाना। ये वाला खाना ना देख देख के आवाज़ारी होने लग पड़ती है, अब वो टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब देखे ना हमारा काम ही ऐसा है कि हम एक चीज़ देख देख के डेली एक चीज़ देख देख के हमारा दिल भर गया। आपको पता है एक चीज़ आपको जब मिल जाती है आपका दिल भर जाता है, ये वही वाला हिसाब है। जी बिल्कुल ऐसे। खुद भी कुछ बना लेते हैं? जी मैं सारा कुछ बना लेता हूँ। क्या क्या बना लेते हैं? मैं बर्गर, चिकन बर्गर्स बना लेता हूँ, मैं बीफ बर्गर्स बना लेता हूँ, मैं राइस बना लेता हूँ, मुझे बिरयानी बनानी आती है, मैं अंडे वगैरह बना लेता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे किस्म के, चीज़ ऑमलेट बना लेता हूँ, चीज़ पराठे बना लेता हूँ घर में। सब भी बना लेते हैं? सब बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि दो फूड्स को मिलाकर अगर आप एक फूड बनाए तो वो दो फूड्स कौन से होंगे, और जो नया फूड बनाएंगे उसको नाम क्या देंगे? अच्छा, मैं दो फूड बना के मैं चिकन बिरयानी और चाइनीज़ चावल को जो है मिक्स करके ना चाइनीज़ बिरयानी बनाऊँगा। ये अच्छा है। हाँ, चाइनीज़ बिरयानी मैंने 1-2 बार ऐसे घर में ट्राई किया हुआ है, बाहर से बिरयानी मंगवा के और किसी और रेस्टोरेंट से चाइनीज़ राइस मंगवा के ना उसको मिक्स करके बिरयानी वाले चिकन के साथ खाया था तो बहुत मज़ा आया था। ये मज़े का था? मज़े का होता है, बस सुनने में अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। बाहर घूमने में किसके साथ पसंद है आपको? यार दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ कोई फनी मेमोरेबल स्टोरी फूड से रिलेटेड? फूड से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मेरे टिकटॉक पे जितनी भी वीडियोस लगती हैं वो सारी फूड की ही होती हैं, तो मैं उनके साथ प्रैंक अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। जब मुझे किसी रेस्टोरेंट से स्पॉन्सर होता है ना तो मैं मेरे अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार आपने मुझे ट्रीट देनी है यहाँ की, वो मान जाते हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने मुझे बोला मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया। फिर जब वहाँ जाके मैं 5-10 हज़ार रुपये का जब खाना टेबल पे आ जाता तो उनके एक बार रंग उड़ जाते हैं। फिर कोई बंदा कहता है कि यार मैं ज़रा वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझे घर से फ़ोन आ गया, फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि यार स्पॉन्सर फूड है, आप लोग टेंशन ना लो, पैसों की टेंशन ना। फिर वो बहाने लगाने शुरू कर देते हैं, हम निकलो यहाँ से। जो दोस्त कह रहा होता है कि यार मंगवा लो जो आपने मंगवाना है, मैं खिलाऊंगा, जब पूरा टेबल भर जाता है फूड से फिर वो एक बार परेशान हो जाता है कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो इतना हो गया, ये तो वैसे भाई नहीं तो खाना मंगा लिया। फिर मैं उन्हें बताता हूँ जब वो परेशान, वो एक बंदा कहता है कि यार मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, 15-20 मिनट के बाद आता ही नहीं है, उसको लगता है कि बिल आएगा जब वैसे भी दे देंगे तब मैं जाऊँगा आराम से। लेकिन फिर उनको समझा देता हूँ कि यार ये स्पॉन्सर फूड है, कुछ भी नहीं होता है, रिलैक्स करो। कुछ सुनाना चाहेंगे? यार गज़ल है एक उसकी गुलाम अली, रूह ले गया दिल दा जानी ते पुत सानू चुकना पिया, रूह ले गया हो दिल दा जानी। थैंक यू सो मच।
BISP सेंटर गुरुचक में करप्शन और माली बेज़ाब्तगियां अरूज पर। ज़राए के मुताबिक BISP सेंटर में रात गए टोकन और ID कार्ड्स का गैर कानूनी असूल जारी है। रिटेलर्स रात गए मखसूस खवातीन के घरों में जाकर इनसे टोकन और ID कार्ड्स ले लेते हैं। सुबह के वक्त फकत यही कार्ड स्कैन करके इनको पेमेंट की जाती है, जिनसे मनपसंद रेट के मुताबिक 500 से 2000 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, जबकि बाकी खवातीन खाली हाथ रह जाती हैं। खवातीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 15 दिनों से BISP सेंटर पर रोजाना आती हैं, लेकिन इन्हें हर बार ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि इनके कागजात मुकम्मल नहीं हैं या इनके टोकन की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि सिफारशी और मनपसंद टोकन वाली खवातीन को पेमेंट कर दी जाती है। ज़ईफुल उम्र खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्ची है हर रोज आने सानू वापस भेज दिता किराया ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਦੇ ਸਾਨੂੰ 2-2000 3-3000 ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੌਂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। जैसा कि खवातीन का कहना था कि हम यहाँ BISP प्रोग्राम के एवज मिलने वाले अपने पैसे वसूल करने के लिए आती हैं, लेकिन हमें रोजाना जलील किया जाता है, हमारे साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ना पानी का कोई मुनासिब इंतजाम है और ना ही कोई मुनज़्ज़म तरीकाकार है। जबकि BISP सेंटर के असिस्टेंट अफसर रांझा के मुताबिक हम अगर शिकायत पर रिटेलर्स की डिवाइस ब्लॉक करवाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाइस दोबारा एक्टिवेट करवा लेते हैं, और इतने बड़े सेंटर्स पर हमें सिक्योरिटी के भी काफी इश्यूज हैं, और इतनी तादाद में आई खवातीन के लिए सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद है जो कि नाकाफी है। जी एक कंप्लेन आई सी कि एक बीबी थम लगवा रही है और पैसे कह रही कि मैं घर जाके देवांगी। वो अगर घर जाके देंदी तो ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਸਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 3 दिन तो बाद वही रिटेलर दोबारा डिवाइस इशू करवा के थे काम कर रहे हैं। जामिया की तरफ से हमें इधर जो नफरी है कम अज़ कम कोई 10-15 जो है पुलिस वाले एहलकार जो है उनकी ज़रूरत होती है। वो इधर सिर्फ एक कांस्टेबल है और 2 लेडी कांस्टेबल होती हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा इधर पानी का भी जो है कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारी तरफ से ये होता है कि हमने इनको टोकन इशू करना होता है और टोकन के ऊपर लिखना होता है कि इस बीबी की अमाउंट कितनी है ताकि वो पूरी अमाउंट जो है वो हासिल कर सके, लेकिन हम उनको टोकन बना के दे देते हैं। 5 यहाँ पे रिटेलर आते हैं पैसे देने के लिए, उनका कभी कोई नेट का इशू होता है, कभी किसी का फिंगर का कोई इशू होता है। जो भी इश्यूज़ हैं वो इन रिटेलर हजरात की तरफ से हैं, और ऐसी बीबियाँ भी हैं जिनके पास 10-10, 15-15 दिन के टोकन मौजूद हैं और उनको अभी तक जो है पेमेंट नहीं हुई। BISP सेंटर गुरुचक, जहां खवातीन अपने रोज़मर्रा के कामों को पसे पुश डालकर सिर्फ ये उम्मीद लेकर आती हैं कि आज इनको भी हुकूमत की जानब से मिलने वाली इमदाद मिल सकेगी और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेगी, लेकिन कोई भी मुनज़्ज़म तरीका का ना होने की वजह से वो शाम को फिर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर फरीदी के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। तो यहाँ तंदूर भी लग चुका है और यहाँ पे रोटियाँ लग रही हैं ताज़ी ताज़ी। तो चावलों की रोटी आ चुकी है हमारे पास, मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ढाबों की रिवायात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद नसीम। वसीम, क्या क्या है आपके पास? हमारे पास चाइनीज़ में सब कुछ मिल जाएगा, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल में। कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? हमारे तो जो टोटल ये जो ओवरऑल जो है उसमें तकरीबन 6 और 7 ईयर्स होगी। आपने इधर से स्टार्ट किया? नहीं, हमारी जो मेन ब्रांच है वो मून मार्केट में इकबाल टाउन। यही पॉइंट क्यों चूज़ किया आपने? हमारा पहले इधर सामने होता था, ये तो पहले बिल्कुल मार्केट में इंटर वाली जो जगह है उसमें आपको पता है थोड़ा रश भी ज़्यादा होती है, और अल्लाह का शुक्र अभी काम ही बहुत अच्छा जा रहा है। तो लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? लोग ज़्यादातर हमारी इधर ज़्यादातर जो चाइनीज़ में खाते हैं वो राइस के साथ ग्रेवीज़ है, मुख्तलिफ ग्रेवीज़ है, स्पेशल ड्रैगन चिकन है, कैशनट चिकन है, साथ चिली ड्राई भी है, साथ मोमोज़ भी। आपको बहुत सारे लोग अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो मोमोज़ चल रही है, साथ स्वीट एंड स्पाइसी विंग्स होती है स्टार्टर में। तो क्या रिव्यूज़ होते हैं लोगों के? लोगों के अच्छे रिव्यूज़ है, अल्लाह का शुक्र है, किसी ने अभी तक इतना नेगेटिव कोई कमेंट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। तो आपको खुद क्या पसंद है? मैं तो ज़्यादातर नूडल्स ही शौक से खाता हूँ, चाउमीन। फास्ट फूड या फिर देसी? चाइनीज़। चाइनीज़ पे चल रहे हैं आप? चाइनीज़ में ज़्यादातर नूडल्स ही मैं ज़्यादातर खाता हूँ। जो फास्ट फूड में अगर आप करना चाहें तो फिर आपको पिज़्ज़ा आते हैं, पिज़्ज़ा ज़्यादातर लोग खाते हैं। तो अब चाइनीज़ ज़्यादा पसंद? जी बिल्कुल। उसकी ख़ास वजह? वो मज़े के बनते हैं, हम खुद घर पे ये सब कुछ बनाते हैं, हमें पता है किस तरह बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मज़ेदार चीज़ बनती है। अच्छा, इसके अलावा कोई देसी फूड भी बना लेते हैं या फिर बस यही? देसी फूड इधर कस्टमर्स के लिए नहीं होते, हम अपने लिए खुद बना देते हैं। क्या क्या बना लेते हैं? कहते हैं हमें खाने का दिल करते हम वो बना लेते हैं। तो क्या क्या बना लेते हैं देसी में? हम कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, बारबेक्यू वगैरह जो भी करना दिल करते हैं वो बना लेते हैं घर पे। घर पे हेल्प करते हैं? हम खुद बनाते हैं। खुद ही बनाते हैं? शादी हुई आपकी? नहीं भी नहीं हुई। हाँ, इसीलिए फिर खुद ही करते हैं। नहीं तो बीवी को कौन आराम दे